Excuse me, ma'am. Actually, voice टा clear होनी. Other voice आसुची. टिकिया other voice उड़ा आसुची. एट तो किसी भी अदर वॉइस नहीं कारण एटा रूम टा तो एबे टिके ठीक है ma'am. Yes, ma'am. ठीक एटा सुबिला हेलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक अछि बिफोर हम जो क्लास हाँ बिफोर हम जो क्लास रे डिस्कशन करथिले फिजिकल मेथड केमिकल मेथड आउट रे इंट्रा यूरिन डिवाइस मेथड्स physical methods right we have to use condoms for self pregnancies then diaphragm method we should use under a uh, under an expert person then intra-urine device also used we will used under an expert advisors okay then one is Kapoti method we will use after the delivery of a female then it also for say pregnancies it also used as a various methods spacing method terminal method and barrier methods we all discussed about in our past classes then in physical methods then condoms diaphragm and the chemical method foams gels and oils are used then in intra-urine devices we should used under an expert guidance. Then what is hormonal contraceptives? Hormonal contraceptives are oral pills. These pills are orally for 21 consecutive days beginning on the 5th day of our menstrual period. आमर 5th day जो menstrual period परे जो 4th और 5th day परे हमें सही टाइम रे ही यूज कले तो आमर प्रेगनेंसीज रो किछि भय न थाए तो हमें किछि स्पेसिंग मेथड जोडा यूज करूछु then it will be safe. Then emergency contraceptive pills under the family welfare programs during 2002 to 3 the emergency contraceptive is the method that can be used to prevent unwanted pregnancy after an unprotected act of sexual intercourse. So emergency contraceptive pill is also known as oral pills will used after or before keeping any physical relationships will use oral pills or physical methods will use condoms right then post conceptual method or abortion methods are it is also hormone normal progesterone and prostaglandin balance by intra-urine application of 1 to 5 mg solutions then after a few minutes the under sedation the uterus respond with a contraction about 5 within 7 minutes the bleeding occurs. We will use 1 to 5 mg of solution of progesterone hormones. Then it is one type of post contraception method abortion method. Then आमे जो डिस्कशन कले फिजिकल मेथड रे सब ए जिंस यूज हला केमिकल मेथड्स रे ओरल पिल्स यूज कलु देन इमरजेंसी रे भी आमे ओरल पिल्स यूज कलु एंड जदि पोस्ट कन्सेप्शनल मेथड जदि हमर किछि प्लानिंग्स नथिबो किछि ओटे हमर कन्सेप्ट करि गलु देन आमे ताकू किछि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देकी ताकू आमे ब्लीडिंग अकर्स करि परिबा तो एई सब मेथड हला हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स आमे जत्ते भी आमे जहा को भी हेल्थ एजुकेशन दबा तबे एटा फैमिली प्लानिंग बा बहुत हमर पॉपुलेशंस गेन रु आमे ताकू जदी पूरा रखिबा तबे एई सब मेथड्स हम ताकू कहि परिबा जोटा सेफ मेथड सबटु भलो हला कंडोम मेथड तो आराम से देई परिबा आ गोटे हला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एटा भी बहुत सेफ. Then miscellaneous method रे safe periods रे occurs 12 to 16 days before the onset of menstruation. Then terminal methods and male sterilizations also there. Male sterilization or vasectomy comparing simple operation can be performed to male sterilization.
If they don't want more than one child or more than 2 to 3 childs, then men's sterilizations were also there. They operated a simple surgery by the male person. Then it stops the giving. It unable to give birth of the child. Then male sterilization or vaccinostomy, being a comparatively simple operations, can be performed. Then female sterilization. Female sterilization can be done on interval procedures postpartum or at the time of abortion. Two procedures have become very common: laparoscopic and mini laparoscopy. तो ଦି ପ୍ରକାର ଆମର ମେଲ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଗୋଟେ ଯୋଉଟାକି ଅପରେଟେଡ୍ କରିଦେଲେ ମେଲ୍ ଆଉ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡର ମାନେ ସ୍ପର୍ମଟା ଆକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ କି ହବନି। ଆଉ ଫିମେଲ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନରେ କ'ଣ ହବ ନା ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ ମେଥଡ ହଉ କି ମିନି ଲ୍ୟାପ୍ ଅପରେସନ୍ସରେ ତ ଆମେ ଫିମେଲ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆୱାର କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ମେଲ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ଅଲସୋ ଗୁଡ୍। Beyond family planning measures, raising age at marriage, medical termination of pregnancy. ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମେଜର୍ସକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଜ୍ ଆଟ୍ ମ୍ୟାରେଜଟାକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆର୍ଲି ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛୁ ତ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ବି ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ବି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ପପୁଲେସନ୍ ଆଉ ସ୍ପେସିଂ ମେଥଡ଼ଟା ବି ରଖାଯାଏନି ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡର 19ରେ ମ୍ୟାରେଜ କଲୁ। ତ ରେଜିଂ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଇଜ୍ ଫିମେଲ୍ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 30 to 35 ଇୟର୍ ଅଫ୍ କନସେପ୍ସନ୍। ଯଦି ଆମେ 30 to 35 ଇୟର୍ସ ପରେ କନସିଭ୍ କଲୁ ତ ଆମର କନସିଭ୍ ରେଟ୍ଟା କମିଯିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ଏଜ୍ଟା ଆମର ଯେମିତି ଆସିଯାଉଛି 49 ଯାଏ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବେଶୀ ମାନେ ଆମର ହର୍ମୋନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ହର୍ମୋନାଲ୍ଟା ଆମର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ କନସିଭ୍ କରି ହୁଏନି ଏତେ। ତ ଯଦି ଆମେ 30 ରୁ 35 ଭିତରେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ତ ଆମର ଏତେ ପପୁଲେସନ୍ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଫୋର୍ 19 ହେଉଛି ତ ଆମର ସେଇ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିବ। ତ ରେଜିଂ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିମେଲ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସୁନ୍ସ ଆଫ୍ଟର ପ୍ୟୁବର୍ଟି। ଆମର ଏଇଠି ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟୁବର୍ଟି ହେଲା ପରେ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ପୋଭର୍ଟି ଆଉ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫେଥ୍, ସେଥିପାଇଁ କି କରିଦିଅନ୍ତି। Such women have a prolonged fertile reproductive periods of 30 to 35 years of conception. This is because the mean age of puberty in India ranges from 12 to 14 years. तो आमर इंडिया रे कौन होची प्यूबर्टी रेटटा हैला 12 ରୁ 14 वर्ष बा 12 to 14 years। तो आमे ता एई अर्ली एज रे जदी बाहा माने मैरिज होची तो आमर चाइल्ड भी बहुत बार्थ रो बहुत संभावना रहुची। ସେଥିପାଇଁ the mean age that effective marriage of females of all ages in India in 2006 was 19.8 years and 20 to 25 years. But আমি যদি 25 ইয়ার্স পরে 25 টু 26 বা 28 ইয়ার্সরে ম্যাରେଜଟା କରାଯାଏ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ ଏଜ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିଦେବା ତେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଏତେ ହେବନି। Medical termination of pregnancy. Abortion is theoretically defined as termination of pregnancy before the fetus become viable by 28 weeks. आमे आउ जदि किछि मेथड न होला जदि भी कोनोस गाने कनसेप्ट कला तबे हम अबॉर्शन मेथड भी यूज करि परिबा। Then determinants of family planning programs. आमर सब फैक्टर्स कोन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स रो तो सेटा हमें देखिबा। द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन ए डेवलपिंग कंट्री डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड चेंज एजेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी। Then the health and nutrition programs, involvement of community and their participation in creating social support. Strategy effectively used for promotion of the program including IEC. Vehicle transport facilities available on the regular and timely basis, resource available for contraceptive and medicines. So आमे family planning program whenever we will going to organize one family planning program, then what are the effective tools we will use? What are the effective tools such IEC? IEC means chart papers. We have to fix some images, and then
then we have to write in simple language, simple local language. And then IEC also there, then contraceptive pills and awareness programs, and some tools are also there. The vehicle and transport facilities available on a regular and timely basis. Program multiple channels, government, NGOs. We will, with the help of the governments and NGOs, then we will organize awareness programs in community peoples, so that they can know how to plan a family planning program, how will success a family planning program. So we'll organize such a simple theme, so that the people can understand it better. ता माने हला आमे एमिति प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स कोन कोन सब टूल्स नबा। आईसी जेंति आमे चार्ट पेपर रे लोकल लैंग्वेज रे तांको बुझिला वाला लैंग्वेज रे आमे तांको देखिबा। प्लस ता सहित आमे तांको कोन करिबा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आउ सब जेते सब फिजिकल बैरियर मेथड, स्पेसिंग मेथड ता विषय रे तांको सचेतन करेबा बा अवेयरनेस करेबा। ता सहित हाँ केमती करिबा ना किछि एनजीओस किछि गोटे ग्रुप्स एमती करिके तांको अट्रैक्टिव करिके तांको सब जिंसटा को अवेयर करिबा। डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ फीमेल, बेसी आमे फीमेल्स मानु को धरिबा। आ फीमेल्स माने ही कंसीव करंती और फीमेल माने ही जानी पारंती नहीं, कारण इग्नोरेंस से बहुत ब्लाइंड फेथ ऊपर विश्वास करंती। तो तांकू अवेयर करिकी केमिति चाइल्ड स्पेसिंग रखिले आमे उभय माने माँ और छुआ ठीक रहिबे, तांको हेल्थ केमते ठीक रहिबो। तो सेटा हला हमरो टूल्स, family planning tools, health and nutrition programs, involvement of community and their participant in creating a social support. तो आमे तांकू से भलिया भाबरे तो IEC and then some uterine devices and some examples, and also also creating awareness among females persons using TV, medias, etc. etc. तो आमे जदि तांकू मीडियास की किछि नाटक करिकी ए सब जिंस देखै परिबा तो से भलो अवेयर हेबे। तो सेटा हला फैमिली प्लानिंग्स रो टूल्स। इफेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। Avoiding high risk pregnancies. Effects. What are the effects of family planning programs? Because we have to avoid high risks of pregnancies. If pregnancies before 18 years of age and pregnancies after 35 years of age, pregnancies after 4 births and pregnancy less than 2 years apart. Spacing method. We will give space between one to second child's, first child to second child's. We will spacing of 3 years between the two childs. Then pregnancies before, we have to aware that don't conceive before 18 years, and pregnancies after 35 years the child was going to under mature. Then pregnancies after 4th birth, then we will aware they would stop the birth here. It is the avoiding high risk pregnancies माने जेतेबेले आमे एटा केमती हमको इफेक्ट पकोची ना ए प्रोग्राम द्वारा आमे कोन पाउछु ना आमे कोन एठी हमरो 14 इयर्स भितर प्यूबर्टी हे जाए सेते पळे अर्ली मैरिज करंती। तो सेति पे 18 इयर्स बिफोर जे प्रेग्नेंट न हुए आ 35 इयर्स पर जो माने प्रेग्नेंट हेले सेटा अंडर डेवलप चाइल्ड सब डेवलप होंती। 4th birth पड़े अवेयरनेस अवेयर करिबा कि आइदर फैमिली प्लानिंग मेल स्टेरिलाइजेशन कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन पई तांको अवेयर करिबा। देन प्रेगनेंसी रो स्पेसिंग मेथड हार्डली 2 to 3 इयर्स रखिया को कहिबा गैपिंग। तो स्पेसिंग मेथड ताको कहंती सेटा हला अवॉइडिंग। एटा रहउचे फैमिली प्लानिंग्स रो इफेक्ट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देन फैमिली प्लानिंग इफेक्टिव एंड सेफ प्रिवेंशंस। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ निहाती भाबरे maternal and child health we will keep good health both for mothers and child, because if you follow the spacing method 2 to 3 years gaps between one to second child, then it is good for both maternal and child health. Okay, then there has long been evidence from developed countries and that pregnancy too young and too old, many to choose maternal and infant health and new evidence जेतोळे आमे किछि स्पेसिंग रखुनु तो सेतबेले ना चाइल्ड रो किछि डेवलपमेंट भलो रे हे परछि ना मदर्स रो किछि डेवलपमेंट भलो रे हे पर बहुत सारा डेफिशिएंसी हुए जेंति छुआटा अंडरवेट रे हुए बा सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन कुपोषण रो शिकार हुए
आ मदर मध्य स्पेसिफिक किछि माने इमिडिएट चाइल्ड बर्थ परे ता बॉडी रो आयरन कैल्शियम एडा सब लॉस हेई थाए तापरे पुनी कंसीव कला परे तार से लॉस टा कंटिन्यू कर थाए तो सेति पई कि माँ माने कम एज रे भी माने पूरा एजिंग प्रोसेस तांते देखा जाए तो मैटरनल एंड चाइल्ड है बोथ इफेक्ट हेबे जदि किछि हमें स्पेसिंग न रखिबा The infant born as a result of high risk pregnancies are even more vulnerable. Spacing of less than 2 years between birth is especially hazardous because it means lower birth weight and poor nutrition. It is causes as illiteracy, poverty, blind faith, and then poor nutrition. These are the four factors both maternal and childs are affected. तो सेटा हला चारिटा मेथड हला हमर हला गोटे हला इलिटरेसी मूर्खता माने जो माने किछि शिक्षा न थाए आ गोटे हला गरीब जो माने थांती माने पैसा कारण से माने भल न्यूट्रिशन पाई पार न थांती तो सेति पई कि आमे ए सब जिनस रे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ रो ठीक रही पारे Asian perspective of health and quality of life. Health policy and perspective in Asia countries. Asia's रे आमे केमती हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इनपुट्स को ठीक रे रखिबा हेल्थ डिलीवरी पर्सनल्स डॉक्टर्स फिजिशियंस नर्सेस मिडवाइफ्स पेरिफेरल वर्कर्स सैनिटाइजेशन वाटर सप्लाई सबुठ इम्पोर्टेंट है सैनिटाइजेशन एंड वाटर सप्लाई कारण सैनिटाइजेशन वाटर सप्लाई टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन दैट अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज तो आम कौ सोर्स रु पानी पीऊचे कौ सोर्स रु पानी यूज करूचे तो सेटा आमको देखा पड़ो कारण कंटामिनेशन बेसी होता है माने फूड रे जेतिक होता है वाटर कंटामिनेशन रे बहुत होता है से बहुत प्रकार डिजीजेस इन्फेक्शंस इन्फ्लामेशंस क्रिएट होता है तो से सैनिटाइजेशन वाटर सप्लाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट को वाटर सप्लाई आम यूज करूचु किछि पॉन्ड्स जदि यूज करतबु तबे इन्फेक्शन बहुत अधिका रहिबो किछि वेल जदि यूज करतु कूओ तबे सेथरे भी हबो ट्यूबवेल रे सेफ अच्छी प्लस आम जदि भी घरे सेमती किछि अच्छी आम किछि क्लोरिनाइजेशन मेथड को यूज करि परिबा तो इन्फेक्शन रे ही मोस्ट ऑफ द सिवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन स्प्रेड होता है से कि आम फर्स्ट सैनिटाइजेशन को देखा वाटर सप्लाई को देखा कारण एशियन कंट्रीज रे बेसी अफेक्टेड होता वाटर और सैनिटाइजेशन थ्रू रे बहुत माने आमर डायरिया डिसेंट्री कलेरा आ गोटे एंडेमिक रे आमर आसीगला डेंगू फीवर मस्किटोज एरिया जोठी थी समस्त को स्प्रेड हो जाए तो से कि सैनिटाइजेशन तो बहुत दरकार एनवायरनमेंट क्लीन रखिबा ये सब क्लीन रखिबा माने बिफोर टेकिंग फूड माने आफ्टर डिफिकेशंस वी हैव टू क्लीन आवर हैंड इन सोप सॉल्यूशंस एक्सेट्रा तो हमको सब हाथ भात धोई के हमको किसी जिनस टच करिया दरकार तो वाटर सप्लाई इंपोर्टेंट एंड सैनिटाइजेशन इंपोर्टेंट Then second is DNHE-2, public health and hygiene. Agents of contamination. The topic is unit 4, agents of contamination. What are the agents of contamination? We are affected and we got lots of diseases, endemic, epidemics diseases. Infection is a state when microorganisms succeed in entering a host and reproduce more of the kind. Disease is the onward clinical manifestations of these infections. So what are the agents of contaminations? Agents of contaminations are the major bacteria, fungi, protozoa, metazoal parasites, etc. Parasite, bacteria and fungi are agents of contaminations. They are spreads through water, food and etc. So, they are all parasite in nature because they live at the expose of host, they invade, they replicate the tissues of the host and thereby cause an infections. For example, the virus that cause influenza enter the body in the human and multiplies by reflecting spreading influenza infection in the host. When the parasites or fungi and bacteria enters in our body through our foods or waters,
then it's multiply their levels in our body. So lots of organs are affected here. The three major माने ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ପାଣି ଦ୍ୱାରା କି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଭିତରକୁ ଗଲା ତ ସେମାନେ ସେଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଥାନ୍ତି। ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା ପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅର୍ଗାନକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ପତଲା ଝାଡ଼ା ହୁଏ, ଫିଭର ଆସେ, ତ ଭମିଟିଂ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ଆମର ହୁଏ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ସକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି। Three major factors have to interact with each other for a disease or infection to occur. These are the agent of infection, the mode of transmission of infections, and the host. Three major factors are there. One is agent of infections, bacteria, fungi, or parasites. Then mode of transmission of infections are water or food, etc. Then the host are what are the kind of parasites they were. Three major factors were there. The agent is very cause of disease or infection. The second link in the chain infection in transmission, the process by which the agent passes the host. The final link in this chain of infection is host. It is known as contamination. The presence of effective agent on a body surface or an intimate object or substance is termed as contaminations. Such as virus, when you get the food can be contaminated by microorganism causing cholera, diarrhea, dysentery, etc. Process of cleaning the source of the patient's you hand get contaminated, towels are used the cleaning of get contaminated. Okay, when we will take stale food, yeah, food shitting flies on it we are taking, then it will be contaminated and the disease caused is diarrhea, dysentery, and cholera, vomiting, etc. And however important is the infections agent in a human does not necessarily confirm the presence disease. अच्छा गोटे जिनस है आमर जो होस्ट रहा होस्ट जे आमर एटा जो आमर कंटामिनेशन है माने बासी खाद्य कि खराब खाद्य जो माछी पाछी बसी खाद्य खाइले आमको यही सब जिनस है आमर कौन कहती आमर सेटा कॉलन इन्फेक्शंस हुए। कॉलन इन्फेक्शंस हेले कौन हुए ना लूज मोशन करेइबो, वॉमिटिंग करेइबो, फीवर आसीबो। तो सेथिपाई कि एटा आम रहिला भाइरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल पैथोजेंस। दे कैन प्रोड्यूस मल्टीप्लाई इनसाइड द बॉडी लिविंग सेल्स एंड एंटायरली मेक यूज ऑफ द मेसिनरी न्यूट्रिएंट्स एंड नेसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा भाइरस टा हैला वाटर ब्रोन होस्ट सॉरी भाइरस आर एयर ब्रोन होस्ट। एयर रे धर जन को आमको माने काश माने होउची तो सेटा आसी जदि आम पाखे गोटे कि गोटे डिस्टेंस मेंटेन न करी से कासिला तो सेटा एयर ब्रोन इलनेस पाई कि सेटा एयर रो आमको स्प्रेड हबो थ्रू आवर बॉडी एंड इट विल मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल्स। सेटा मल्टीप्लाई करिकी से लंग्स अफेक्ट करिवो तापरे विभिन्न जेमति कहली मल्टी ऑर्गन किन प्रथमे जेहेतु एयर ब्रोन डिजीज एटा एयर ब्रोन होस्ट रा तो से माने फर्स्ट लंग्स को अफेक्ट करिवे देन अदर ऑर्गन्स। Though it is reproduction from the cell, they deplete and destroy the cell, which ultimately lead to organic dysfunction and hide in the antibiotics. Antibiotics are designed to attack pathogenic microorganism, not the host cell. एंटीबायोटिक्स आम जो नौचु सेटा केवल प्रोटेक्शन पाई सेटा केबे भी भाइरस को आम मारी परिबानी कि होस्ट को आम डिस्ट्रॉय करि परिबानी कारण माइक से जो आमर होस्ट एते स्ट्रांग थांती से माने इजिली ह्यूमन बॉडी रे एब्जॉर्ब होके रही पारंती। तो सेति पे होस्ट मान को मरा जायनी खाली जस्ट एंटीबायोटिक हम गोटे प्रोटेक्शन सिंपल दिया जाए। तो सेति पे कि तांकर जोटा पावर टा थाए सेटा माने कमी जाए। एक्सक्यूज मी मैम मैम ए जो वायरस टा जो कहले एटा कोन ए जो हमर कोरोना रे जो वायरस टा आस्थिला स्प्रेड हेतिला सेटा में जनरली समस्त एंटीबायोटिक नेले तो से लाइक सही भळा हाँ सही भाया कारण से आम के होस्ट को आज जाए के मारिबार कौन सी किसी आमर माने सेमती आम कि बाहर ही कर होस्ट को मारिया बाहरनी किंतु होस्ट को कंट्रोल रे रखिकी वीक करिवार सॉल्यूशन टा हला एंटीबायोटिक माने तार जोटा आमर तार जो पावर टा से बॉडी को जमती लंग्स को पूरा नष्ट करिवो से पावर टा को कमेया पे हम एंटीबायोटिक दिया जाऊ ताकू हमें मारी परिबानी ता पावर कमी गला परे से ऑलरेडी ये हो जाए किंतु होस्ट टा मरेनी केबे है ना। तो सेति पई के हम सब
जहाँ को वायरल फीवर वायरल कफ वायरल रो किछि भी जिंस भाइरस माने वाटर एयर ब्रोन रोडा अच्छी तेबे तांकू हमें अवेयर करिबा कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करिबा वी हैव टू यूज मास्क यूज करिबा है ना तो सेटा हमें प्रिवेंटिव मेजर्स सोडा नहीं परिबा होस्ट को मारी परिबानी है ना आज्ञा मैम ठीक अछि this is why an infection of virus more serious than infection by the category of microbial agents of disease antibiotics have no effect on viruses antibiotic रो कोनोसी इफेक्ट वायरस ऊपर हुए नहीं खाली तांकू तार इफेक्ट टाकू कमाए है ना तो तादरे कोन आछि बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू व्हिच द बॉडी बिकेम सस्पेक्टेबल ड्यूरिंग द वायरल इन्फेक्शन सम ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस एज फ्लू पोलियो स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स मिजल्स मम्स ए सब एक्सेट्रा जत्ते सब हमर हर्पिस एड्स रैबिस जत्ते सब अछि तो सेटा सब हमर वायरल इन्फेक्शन रु हुए किछि जिंसर हमर अच्छी कि जेतले इन्फ्लुएंजा होची फीवर होची वायरल जोड़ा होची सेटा से 3 दिन 5 दिन रहिला परे से वायरस टा वीक हे जाए तो सेटा कम आमे नौ किंतु ताठ जदी अधिका दिन 5 डेज रु मोर देन से हम बॉडी रे रहिला तो सेटा हमकु टिके एंटीबायोटिक सरका यूज करिया को पड़िबो देन rickets rickets are like a virus they are also parasites माने जानि छंती तो parasites माने तांकर निजर किछि भी होम घर एंती किछि न थाए से माने अन्य ऊपर डिपेंड करी कि पूरा रहितांती तो parasites सबले मल्टीप्लाई हे थाए हला parasites multiplies only inside a living cell भितरे ही से मल्टीप्लाई हबो आउ कोठी हबनी तो but unlike viruses they are susceptible to antibiotics they are unlike virus they are visible under a conventional microscope by specific technique and humans bites of the infected ticks lice fleas जेमति हमरो खटरे जो ओडस होंती हला उकुणी होंती लाइस ए सब जिंस पैरासाइट कारण जेतोले उकुंटा मुंडरे रुहे किछि पाएनी मनीषर सब जो तांगर हेयर रो जहाँ भी थाए कि रक्त ए सब जिंस पैरासाइट खाई कि रुहंती तो सेडा सब पैरासाइट रे हेले आपन को सेडा आसीबो लाइस फ्लीज टिक्स ए सब डिजीज caused by rickettsial and Q fevers French fevers rickettsial pox roxy mountain spotted fever tick fever typhus सेडा सब पैरासाइटिक इन्फेक्शन रो हे थाए तो पैरासाइट इन्फेक्शन बेसी हुए उकुणी लाइस आ गोटे हला ओडस टिक्स ए सब हला पैरासाइटिक इन्फेक्शन हम बॉडी को हुए बैक्टीरिया कैन मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल वायरस और पैरासाइट टा इनसाइड सेल रे मल्टीप्लाई हुए बैक्टीरिया टा आउटसाइड लिविंग सेल रे हमरो मल्टीप्लाई हुए दे कैन देयरफॉर बी कल्टिवेटेड ऑन आर्टिफिशियल मीडिया they can also be seen under a conventional microscope bacteria caused by disease identified and cure diphtheria whooping cough tuberculosis cholera acute diarrhea एटा हला water borne disease रे माने जलवाहित रोग तो पानी द्वारा बेसी कंटामिनेशन हे थाए फूड एंड वाटर द्वारा बेसी हे थाए तो सेतरा हमु कलेरा हे थाए कारण सेटा इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करि थाए जेतेबेले हमें पानी नौ कि खाद्य रे कंटामिनेशन हला सेटा इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करि थाए जा फले टाइफॉइड आंतरिक ज्वर देन एक्यूट डायरियल कजेस डिसेंट्री टाइफॉइड आसला टिटेनस ट्रैकोमास्ट्रा एंड अदर इन्फेक्शंस लाइक ईयर आई थ्रोट ए सब जिनसडा हे थाए सेटा हला वाटर ब्रोन डिजीज बा वाटर ब्रोन होस्ट ताको कहंती सेटा हला बैक्टीरिया सेटा कोन हुए आउटसाइड रे पानी रे बहुत डेवलप करंती कोटी स्टैग्नेंट वाटर अछि दे कैन डेवलप इन स्टैग्नेंट वाटर किछि ओडे जिंस अछि सेतरे होंती सेटा जदी बॉडी को हमरो ओराली गला तो सेटा हमरो बॉडी को इन्फ्लेम्ड बा इन्फेक्शंस क्रिएट करिवो तो बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स मल्टीप्लाई इनसाइड सेल and bacteria multiply outside living cell रे create हे कि body को जाए कि infection करंती then we will study about fungi these fall in between the free living and the host dependent parasites in other words they can live outside a living organism totally dependent of it as well as of the living organism like a parasite आपण जानि थिबे फंगस फिम्पिरु हुए मशरूम हेडा सबुठु भलो बी विटामिन्स थाए B12 तो फंगस टा मशरूम इज ए फंगस दैट ग्रोज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग गोटे लिविंग होस्ट जदी आपण किछि गोटे लिविंग पके देथिबे जेंति कि आपण गोटे बुट्ट पके देले कि मटरटे पके देले से किछि दिन परे
सेटा यदि किछि भी माने माने सेटा सढ़िबो ये हबो सेथरु गोटे फंगस क्रिएट हुए तो सेति पई कि न्यूट्रिटिव वैल्यू तार भलो किंतु सेटा हला परजीवी हला फंगी are grown on the skin of man is like a parasite skin infections जेमती आमर किछि गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म उपरे आमर गोटे सढ़ी गला परे आमर गोटे मशरूम्स बनी जाउची सेमती लिविंग ऑर्गेनिज्म जेमती आमर स्किन आउटसाइड सेल रे सेटा मल्टीप्लाई हबो आउटसाइड स्केल रे किछि गोटे जदी मॉइस्चर डिपोजिट हला किछि गोटे ड्राइनेस आसिला तो सेठी जदी मॉइस्चर बेसी रहिला ई जगह रे आ सेई जगह रे आमर कोन हुए ना फंगस डेवलप करे हला तो सेटा हला स्किन इन्फेक्शंस और ग्रोइन बिटवीन द फिंगर्स माने जोटा कि जॉइंट्स जगह मन करे जोठी कि मॉइस्चर लागिले से भितरे जापी हे कि रहि जाए मॉइस्चर टा तो एयर पास हुएनी तो सेठी फिंपी माडे सेटा हला हमर फंगल इन्फेक्शन माने कोन नखा हुए हला जंघ संधि रे हुए तो सेटा सबु जॉइंट्स एरिया मानस करे जोठी कि एयर सर्कुलेशन भलो हुएनी आ सेठी पानी बहुत रहि जाए तो सेठी फंगस क्रिएट हुए ता माने स्किन डिजीजेस जते सब हुए फंगी पई की आ बैक्टीरिया इन्फेक्शन जते हुए पेट जनित रोग पई कि हमरो जते सब इंटरनल येर आउटसाइड रो आसी कि इनसाइड को गला आ वायरस टा डायरेक्ट इनसाइड रे एयरबोर्न थ्रू रे वायु द्वारा जाई कि हमरो क्रिएट हुए ठीक अछि एबे प्रोटोजोआ these are single cell organism and can be identified under a microscope and destroyed with a suitable chemotherapy example of some diseases are protozoa malaria amoebic dysentery kala-jar माने जोटा कि acute नहीं जोटा कि fatal diseases रहिला कैंसर टाइप रो डिजीज रहिला कि प्रोटोजोआ को से बहुत जल्दी मल्टीपल है होल बॉडी रे स्प्रेड करि जाए तो सेति पई ताकर स्पेसिफिक थेरापी अछि से जगह लाइट पकेबा से जगह गरम लखेबा से जगह को पूरा संपूर्ण भाव में नष्ट करबा नले से बहुत कम दिन भीतर डेवलप करि जिवो तो प्रोटोजोआ सेटा हला हमरो फाटल डिजीजेस बा सांघातिक रोग मानकरे प्रोटोजोआ सेटी डेवलप करो एक्सक्यूज मी मैम हां मैम ए जो मलेरिया रे प्रोटोजोआ लेखा जेटा माने कोन एटा त आपण कहले बहुत बड़ डिजीज हेले एटा सिवियर डिजीज सुनंतु फीवर हला हमरो वायरल फीवर टा हला कॉमन फीवर हला सेटा बॉडी रो फ्रेंडली डिजीज सेटा कला माने अपन बॉडी रे क्लीन अप हुए आ मलेरिया हो कि टाइफॉइड हो सेटा हमर एक्यूट डिजीज रे भी जाउन हेडा क्रोनिक स्टेज रे जाउछ कारण मलेरिया पई कि अलगा सब ऑर्गन्स अफेक्टेड हुए किडनी अफेक्ट हुए हमर लिम्फ ग्लैंड अफेक्ट हुए तो सेति पई हमर मलेरिया को फेटल डिजीज रे जाउची मलेरिया रू ब्रेन मलेरिया हुए ऑर्गन्स डायफंक्शन हुए तो सेति पई कि मलेरिया भी प्रोटोजोआ पई कि हुए है अमोबिक डिसेंट्री जो अमोबिक डिसेंट्री माने कोलाइटिस जो मानको रहूची माने बहुत दिन धरी डिसेंट्री हे कि मन वेट लूज हे जाए इम्यूनिटी डाउन हे जाए सेटा पे अमोबिक डिसेंट्री एंड काला अजर जोटा रहे कला ज्वर आमे कहूछु बा कोनोटे मशा कामुडला द्वारा से मानकर डिटोरेट करे बहुत डेथ रेट भी मानकर बढ़े ब्रेन मलेरिया रे बहुत लोक मरंती काला अजर रे मरंती अमोबिक डिसेंट्री रे बहुत वीक हे कि मालनरिश्ड हे जानती तो सेति पे सेटा कारण प्रोटोजोआ मान तारो किछि कंट्रोल नाही से लाइफ लॉन्ग कंट्रोल हे ही से रहिबो किंतु हेल्थ ता भलो हुएनी तो मेटाजोअल parasites unlike the protozoal parasites multicellular organism एटा भी गोटे टाइप रो parasite मेटाजोअल parasites examples हला they can affect man's are all kinds of worms and get into the bodies the hookworm tapeworm roundworm guinea एटा सब जोटा मेटाजोअल parasites जोटा रहिला से parasite टा हमर केमती हुए ना हमर worm डेवलप हुए जोथरे कि हमर बॉडी रो माने किछि भी न्यूट्रिशन भलो माने बॉडी एब्जॉर्ब करिया को दिएनी तो हमर बहुत सारा चेंजेस हुए स्किन रे स्पॉट्स आसी जाए हमको चिड़चिड़ा लगे डिप्रेस भीतर को जानती तो ये सब ओर्म गोड़ा एटा भी वाटर ब्रोन रो माने होस्ट गोड़ा तो हुकवर्म टेपवर्म राउंडवर्म गिनवावर्म आ गोटे मेटोजोअल पैरासाइट रो क्वेश्चन आसीबो तार ग्रेट एग्जांपल हला फाइलेरियासिस जोटा हमर पाद फुली जाए और बहुत पस हुए सेटा जल्दी सेटा भी हमर फाटल डिजीज रे जाउची तो सेटा भी मेटाजोअल पैरासाइट्स द्वारा फाइलेरिया हुए मेन हला मेटाजोअल पैरासाइट्स रो कॉजेस हला होस्ट हला हमर फाइलेरिया मेन डिजीज जोटा कॉज्ड हुए आ गोट हला एक्टो पैरासाइट्स एडा सब ये करी मेटाजोअल पैरासाइट्स ता हला फाइलेरिया आउ बाकी नॉर्मल पैरासाइट्स जोड़ा हला सेटा हला जो कुणी लाइस हला टिंक ए सब हला नॉर्मल पैरासाइट्स एटा हला मेटाजोअल पैरासाइट्स आ प्रोटोजोआ हला हमर अमोबिक डिसेंट्री काला अजर कैंसर
मैम क्वेश्चन टा कौन आसीबो ए जो आपण कहले मेटोजल पैरासाइट रे हाँ तार डिजीज कॉज्ड बाय मेटोजोयल पैरासाइट्स आपण लिखिबे फाइलेरिया मेन आ खाली जदी पैरासाइट्स ट्रांसमिटेड बाय ह्यूमन जोटा होची तो से माने जनरल पैरासाइट्स व्हाट आर द जनरल पैरासाइट्स एंड व्हाट आर द जनरल माने नॉर्मल पैरासाइट्स हेले सेटा आसीबो लाइस फ्लियस एंड टिक्स से माने हला मनुष्यर रक्त खाई के रहंती है तांको न्यूट्रिशन को नहीं कि से रुहंती त माने बाहर कोठो आनंतीनी आ गोटे हला हमर फंगी जोटा कुहा हबो सेटा आपण स्किन डिजीजेस रे एक्जिमा हला एक्जिमा स्किन ये आ गोटे रुहे जो कोण नखा सब हुए तो ये सब लिखिबे आ प्रोटोजोआ रे तो लिखिले मेटाजोयल ये रे लिखिबे फाइलेरिया आ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रे लिखिबे डिसेंट्री डायरिया कॉलेरा ए सब टाइफाइड मेन हला बैक्टीरिया ये रे इन्फेक्शन आ वायरस रे लिखिबे आपण अस्थमा ब्रोंकाइटिस ए सब लिखिबे sources and reservoirs of infections sources टा हला human reservoirs रे हले human animal non living things persons who have the disease the presence of the disease in the person may have different orders clinical which means the person has the disease and full blown signs and symptoms which can be clearly identified and subclinical which means the person has the disease as an गोटे हला सोर्सेस ऑफ रिजर्वियर्स व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शंस रो सोर्सेस सब कोन सेटा हला थ्री काइंड्स ऑफ रिजर्वियर्स हला ह्यूमन एनिमल नॉन लिविंग थिंग्स विल डिस्कस अबाउट थ्री डिटेल्स ह्यूमन रिजर्वियर्स हला दिस इज द मोस्ट कॉमन रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शंस ऑफ ह्यूमंस इन्फ्लुएंजा मीजल्स चिकन पॉक्स मम्स ओम्स एड्स पोलियो एक्सेट्रा person who have the disease the presence of the disease in a person may be different orders clinical and full blown signs and symptoms and subclinical eta hala sources of infections hala persons who have the disease गोटे पर्सन कर जो जो डिजीज थी जमती कि पोलियो से माने वैक्सीनेशन नहीं नहांती तांको पोलियो हेची हैला आ गोटे इन्फ्लुएंजा रहिला तांकर मिजल्स गोटे हेची मम्स ओम्स एड्स पोलियो जतोले हमर इम्यूनिटी सर्वाइवर को कुहा जाए तो एटा लाइफ रे थरे थरे निहाती हुए है तो एटा इन्फेक्शंस ऑफ ह्यूमन माने जोटा हमर रहुची द पर्सन हु हैव द डिजीज सेटा हला क्लिनिकली हमें तांको देखिबा द पर्सन रो हैज द डिजीज एंड फुल ब्लोन साइन एंड तार साइन और सिम्पटम्स भी रहा दरकार धर मिजल्स हेले आम केमती जानिबा ताको मिजल्स हला बोली ता साइन सिम्पटम्स देखि परिबा छोट छोट दाना है कि रेड रेड रैशेस आसी जिवो स्किन रे फीवर आसीबो हला तो क्लिनिकली आमे जदि देखिबा तबे साइन एंड सिम्पटम्स को देखिले आमे जानि परिबा एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस ही और शी वाज सफरिंग फ्रॉम तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन about the signs and symptoms of the patients or persons आमे signs symptoms रा देखिबा then subclinical infections occurs in the infectious disease such as mumps polio hepatitis A B influenza diphtheria great subclinical infections kept occurring and during the person's life help to develop immunity to a variety of disease immunity will be discussed later in this subject. So third order of infection in a person is what is called latent infections. The person who have the infectious agent in their system but do not show any evident disease. Ita kono? Now the immunity of the disease that the source of infection others and such as termed as carrier specific disease or infections. Carriers are less infectious than causes just before and they are more dangerous because they do not get detected and living a normal life and among other the people continue to suspect. Second point hela the persons who have the infectious agents in their system gote loko dhere infectious agent achanti kintu तार किछि sign and symptoms देखा जाउ नाही तार बहुत प्रकार मन तार स्किन रो प्रॉब्लम अछि किंतु सेटा सबुआडे स्प्रेड हेनी गोटे जगह रही कि ता भितर बहुत गैस्ट्राइटिस बा कोन एसिडिटी अछि कि सेटा ऊपर को देखा जाउनी कि साइन सिम्पटम्स तार नाही तम हाइपरटेंशन रो कि साइन सिम्पटम्स न थाए
तो लास्ट बेलू देखला बेलू माने आइदर बीपी बहुत बढ़ी थाए ना कमी थाए तापर आमे जानू कि तार साइन सिम्पटम्स किछि न थाए तो सेटा से कहूचे कि पर्सन हु हैव द इन्फेक्शियस एजेंट्स इन देयर सिस्टम रे तांगर इन्फेक्शियस एजेंट्स अछंती वायरस हो प्रोटोजोआ हो जहा अछि किंतु क्लिनिकली बा हमकु साइन सिम्पटम्स रे जाना पड़ुनी तो एनिमल रिजर्वियर हला बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शंस तो हमरो मैम एक्सक्यूज मी मैम ये ह्यूमन जोटा कहले किसी सिम्पटम जाना पड़ुनी तर हठात जोटा कहले आपण हेला तबे इठी कोन माने केमते जा केस ऑफ इन्फेक्शन रे गोटे अछंती एनिमल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन सॉरी एनिमल को ह्यूमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन को बॉडी आगे रे ऑलरेडी थाए किंतु सेटा सस्पेक्ट है कि थाए सेटा ऊपर को साइन सिम्पटम्स रे देखा जायनी आ सी ही बेसी स्प्रेड करती है हला किछिटा जेंति मु कहले कि कोन कोन कहले कि मिजल्स चिकन पॉक्स सेत पे कि तांकु सबु हमकु कोन करा जाय तांकु गोटे रूम रे स्पेसिफिकली रखा जाय हला जेंति हमें कोरोना टाइम रे पूरा अलगा रूम रे हमें गोटे रहिलु माने कहा कंटामिनेशन न हो सेमिति हमरो बॉडी रे किछि सिम्पटम्स न थाए एटा ह्यूमन इन्फेक्टेड डिजीज ओडा ह्यूमन इन्फेक्टेड डिजीज हला कोन ना इन्फ्लुएंजा चिकन पॉक्स मॉम्स ए सब जिंस ओडा स्प्रेड हुए एड्स टा भी स्प्रेड हुए एड्स टा सेक्सुअल कंटामिनेशन स्प्रेड हबो ब्लड ट्रांसफ्यूजन समय स्प्रेड हबो तो एटा हला ह्यूमन रिजर्वियर इन्फेक्शंस स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन मैम ऐसे जो गोटे गोटे लोकन को सब माने केते जन को एटा जना पड़े आ केते जनकर जना पड़ेनी लक्षण गुडाक सब किंतु से कोन करे जते जना पड़ेनी सेतले अन्य संगे रे मिसि जाय कि कोन करि जाय तो से लोक को ऑलरेडी स्प्रेड हे जाय हला सेति पई कोनती ह्यूमन रिजर्वियर डिजीजेस ह्यूमन रिजर्वियर ए जिंसडा साइन सिम्पटम जना पड़ेनी किंतु देखिबे चिकन पॉक्स जदी आमे तांकू गोटे सेफ्टी अलगा जगह रे न रखिबा तो आमर देखिबे से पूरा स्प्रेड हे जायथिबो जदी कोविड रे आमे जदी सेंती न रही थांतु तो हमको समस्त को एरिया जाकर स्प्रेड हो जाता तो से ह्यूमन रिजर्वियर डिजीज है ए स्पेसिफिक डिजीज जोटा कि साइन सिम्पटम्स जना पड़ेनी कि देखला बेलू बहुत लोग स्प्रेड हो जाइए से जना पड़ा बेलू से एंडेमिक ना दिहल है आ गोटे है एनिमल रिजर्वियर डिजीज कजेस ऑफ इन्फेक्शन मु कहूँ एनिमल रिजर्वियर है बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन केते गोटा बर्ड और एनिमल्स रो डिजीज थाए जानछन्ती आपण जेंति कि हमर एड्स टा हमर कहा द्वारा हेतिला माने हमर गोटा मांकड़ रु स्प्रेड हेतिला सिम्पांजी रु तो एनिमल से एनिमल रु ही जो माने सब घरे रखुचंती ये करचंती कोनोसी जगह रे कोनोसी कंटामिनेशन रे सेटा स्प्रेड हेतिला द इन्फेक्शन जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी हबो हां हबो then the infection and disease which can be transferred from man from birds माने man from birds रो man को हेछि animals are called zoonose ता कहंती ZOONOS zoonose हला सेटा कोन हुए ना animals और birds रो human being को हेथाय एटा क्वेश्चन आसीओ वन वर्ड zoonose these are more than 150 zoonotic diseases that can be catch from the bats and animals for example plague rabies yellow fever क्यू fever काला आजार एरा सब देखंतु किछि मुसा कामुल रे हमकु rabies हेइ थाए तो येलो फीवर भी हमकु हळदिया ज्वर भी सेई रैट रो बाइट ए जो रैबिस टा सेटा बिलेई हो कि कुकुर हो एनी एनिमल कामुले हुए ना एनी एनिमल्स कामुडले हबो जे कोन से एनिमल्स हबे हला तो से माने जदी कामुडिले हमकु रैबिस हबो आ गोटे हला हमर प्लेग हला आ गोटे येलो फीवर भी सेई देखा जायतला गोटे रिसर्च रे येलो फीवर बेसी हेतला से जो हमर सीप मानकर जो मुसा थिले सेना कामुडिया द्वारा काला आजार भी होतला येलो फीवर हला हमें ताको कहूचु जंडिस हला किंतु किछिटा जंडिस टा डेवलप करथिला सेई जंडिस तो वायरल हुए वाटर जरिया रे वायरल हुए जे एटा येलो फीवर जो हळदिया ज्वर हमें कहूचु गोटे रहूची हमर कामळ बा जंडिस आ गोटे हला गोटे मुसा कामुडिया द्वारा येलो फीवर पूरा स्प्रेड हेतला गोटे सीप रे हला आ गोटे काला ज्वर कोला ज्वर तो हेतला तो एटा सब एनिमल्स और बर्ड्स कोठू ही स्प्रेड हुए wild birds in a particular play an important role in spreading the mosquito borne encephalitis जोटा एबे आपण कहिले
तो सेटा गोटे मस्क्यूटो ब्रॉन एन्सेफेलाइटिस एंड सेवरल अदर मस्क्यूटोस ब्रॉन फेब्राइल डिजीज जेमते गोटे डेंगू फीवर हैला मलेरिया फीवर हैला तो सेटा हमर कोन मस्क्यूटो फ्लाइज रो हैला हैला आउ हमर ऑन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर दे कैन कैरी टिक्स इन्फेक्टेड इन वायरस एंड रिकेट्स कैन मेस कॉज्ड इन ह्यूमंस जनरस एंड ह्यूमन हेल्थ एंड मैटर ऑफ कंसर्न 8 माने ए सब जिनसोडा स्प्रेड एनिमल बार्ड्स टू ह्यूमन को हैला ह्यूमन टू ह्यूमन मान को स्प्रेड हैला तो सेति पई आकु एनिमल रिजर्वियर को हैला आकु मैम एटा कोथरे स्प्रेड हुए केमती स्प्रेड हुए एटा धरो आपणकर काला अजर हैला तो कला ज्वर जोटा हैला सेटा भी आपणकर स्प्रेड हबो जदि ताकू छिंको कास्त ए सब रहिला एयरब्रोन रे स्प्रेड हबो आ गोटे येलो फीवर भी एयरब्रोन रे हबो स्कैबिज आउ प्लेग टा पर्टिकुलरली मु जानि नै एटा केमती स्प्रेड हुए किंतु एटा सब एनिमल्स आउ बर्ड्स रो ये रे बाइट रे हुए हला आज्ञा मैम एटा मुसा नु ना कोन कहले प्लेग तो मुसा हां हाँ सेटा मुसा से जो मुसा कामुड़ले हुए तो सेटा कामुड़ला द्वारा मु भाबुची कि सेटा केमती लोकन को स्प्रेड होउची ना बोधे तांकर जो ऊनटा सुखु नथिबो कि सार कंटामिनेशन रे हो कि तांकर कोन कंटामिनेशन से स्प्रेड होउची हला एनिमल आज्ञा बर्ड मैम तापर हला नॉन लिविंग रिजर्वियर सॉइल एंड अदर इंटीमेट मैटर कैन आल्सो एक्ट एटा बड़ लॉन्ग आंसर रे आसीबो हला sources and reservoirs of infections आपण एग्जांपल देबे और तार टिके माने डेफिनेशन लिखिबे non living reservoirs हला soils and other intimate matter that can also reservoirs of infection soil में harbor agents that cause tetanus anthrax mycetoma and agents can be get human or other animals हमर soil आउ जोटा हमर जोटा रहिला soil रू भी बहुत कंटामिनेशन हुए एटा तो एनिमल बर्ड्स रू गला एटा एनिमल्स ए जो ह्यूमंस टू ह्यूमंस गला तो एटा हला सॉइल्स आउ जते हमरो सॉइल्स रे जो प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म थांती तो सेइथरे हमरो कोन होउची टिटानस होउची हम टिटानस नउचू ना खंडिया हे गेले सांग सांग टिट्टी नै जाउचू कारण से सॉइल रे जदी किछि थिबो तो हमकु टिटानस हबार चांस थाए तो सेति पय एंथ्राक्स माइक्टोमा ए सब जिंसडा हमकु हेला परे हम गोटोडा ऑर्गन नष्ट हो जाय थाए हला मैम लॉन्ग क्वेश्चन असले हमें केमती लिखिबो लॉन्ग क्वेश्चन थिले आप लिखिबे there are three kinds of reservoir gote human gote animal gote non living things रे soil सोडा आसीबो हला तो human रे आपण लिखि देबे क्लिनिकली आ सब क्लिनिकली किछि साइन सिम्पटम्स न थाए किंतु से ऑलरेडी स्प्रेड करि जाय एरिया रे हला एग्जांपल आज्ञा आ एटा एनिमल रिजर्वर एनिमल्स और बर्ड्स रो एग्जांपल दे देबे नॉन लिविंग रे सॉइल्स रो कंटामिनेशन हे टिटानस ए सब जिंस होउची लिखि देबे ओन वर्ड रो लिखिले एक्चुअली भलो मार्क आसीबो आज्ञा हला modes of transmission of infection को modes of transmission of infections केमती हुए ना गोटे डायरेक्ट ट्रांसमिशन हुए आ गोटे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हुए आमे केमती कोन करबा डायरेक्ट ट्रांसमिशन कोन हुए ना डायरेक्ट कांटेक्ट दिस मींस a direct and immediate transfer of infectious agents from the reservoir or source of the another person that can be happens in skin to skin contact or by touching kissing sexual intercourse एग्जांपल दे देबे एड्स लेप्रोसी स्किन आई इन्फेक्शंस हला केतबळे ना डायरेक्ट कांटेक्ट केमती हबो ना जणकु धरो छिंको कास होउची हला आपण से छिंकीची हाथ रे छिंकिला आपण सेटु टच कर देले तो आपण आसिले आपण जेंती खाइले कि मुहटा पोछि देले कि कोन कर देले तो इन्फेक्शन डायरेक्ट टच टू स्किन हला the direct immediate transfer infectious माने infectious agent जोडा virus जोडा सेटा कोन हबो ना skin to skin contact us by touching kissing sexual माने intercourse एतिक लिखिबे हला skin to skin contact by touching kissing एतिक एग्जांपल ले दे देबे एड्स लेप्रोसी स्किन डिजीजेस आई इन्फेक्शन स्किन डिजीजेस 20 स्किन जदि ओपन वुंड्स थिबो आपण हाथ मारी के आपण देहरे मार दोचन स्किन डिजीज स्प्रेड हबो तो एटा लिखि देबे डायरेक्ट कांटेक्ट एटा पडिबो श्योर हला ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कोन बुझछंती सलाइवा रे हम कथा होचू छिंकुचू कासुचू हला तो सेठी ड्रॉपलेट सोडा जदि जनक ऊपर पडिला तो सेइथरे से वायरस ता ता देहरे एंट्री कला there is a direct spraying of droplets of saliva and nasal secretion through sneezing coughing speaking spitting talking हला ए चारटा जिंस हम मतलब करिबा सेतोले निहाती हमर ड्रॉपलेट्स जाय के आउ जनक पाखरे पडिबो
ସେଇଥିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ HINY ଭାଇରସ ଯୋଉଟା ଆମର ଆସିଥିଲା ହେଲା, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ, ଆଉ ରହିଲା ବାକି ଆମର ଆସିଥିଲା ଏବେ କଣ କୋଭିଡ, ଆସ୍ତମା, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍, এই ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ। ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ଏକରେ ଲେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯୋଉଟା ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ ଆଇ ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡ୍ରପଲେଟ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ରେ ଏଟା ଲେଖିବେ contact with soil. See, in this case, exposure of susceptible tissues ମ୍ୟାମ୍ directly. ମ୍ୟାମ୍ ଯାହାକୁ ଆଜମା ହେଇଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ସେ ଡ୍ରପଲେଟ ରେ ତାର ଆଜମା ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇପାରିବ ଛିଙ୍କିଲେ କାଶିଲେ? ହଁ ହବ ମାନେ ତାକୁ ଆସ୍ତମା ବି ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଟା ନିହାତି ହବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଟା ଡ୍ରପଲେଟ୍ସ ଥ୍ରୁ ରେ ଏଇ ସବୁ ଏୟାରବ୍ରୋନ୍ ଡିଜିଜ ଗୁଡା ସ୍ପ୍ରେଡ ହୁଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁ ଆନ୍ସର ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିହାତି ଦେବେ। ଆଉ ରହିଲା contact with soil. Contact in this case, exposure of susceptible tissues directly to agent of disease infection present in the soil or decaying vegetable matters conveying the infections to the host. सेटा हला हुकवर्म, टिटानस इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। देखंतु आपण एतले चोपा ये सब जिंस पकोचन तापरे किछि दिन पर ताकू जति देखिबे देखो छोट छोट पोको होय हला पोको होय ଆଜ୍ଞା तो सेई सब आउ केचडा विजिबल थाए किछटा इनविजिबल थाए। तो जदि आमे से तारी कांटेक्ट रे आसीबुल से हातटा धर मारिचु आमे जानिनु धर कोन ओटे पांटा धर देलु कि खाद्यटा नै गलु तो सेइथरे हमरो कि आपनको ओपन वुंड अछि कि छोटे घा खोला अछि तो सेई माटीटा आसी सेठी लागि गला हला तो टिटानस हबार चांस थाए। हुकवर्म आ फंगल इन्फेक्शन देह कुंडे हवा कारण से माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडा आपनको स्किन डिजीज स्प्रेड करନ୍ତି। तो सेटा हला कांटेक्ट विथ सॉइल। तीनटा पॉइंट लिखिबे डायरेक्ट ट्रांसमिशन रे गोटे स्किन टू स्किन कांटेक्ट, गोटे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आ गोटे कांटेक्ट विथ सॉइल हला। Data halla inoculation into the skin of the mucous membrane. In this case, the agent of disease find a direct entrance into the skin or mucous membrane. Rabies virus infected by a dog bite, for example, the hepatitis B as well as AIDS virus infection through contaminated needle series etc. So, the example देबे inoculation into the skin or mucous membrane. ଆମର mucous membrane रे जोटा माने गोटा आउटसाइड हमरो डर्माटाइटिस अछि तो ସେଇଥିରେ ଆମର ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହେଲା ଯେମିତି ଜଣେ କାମୁଡି ଦେଲା ପୁରା ମଶାଟା କାମୁଡି ଦେଲା ହେଲା କୁକୁର କାମୁଡିଲା କି ବିଲେଇ କାମୁଡି ଦେଲା କି ମୂଷା କାମୁଡିଲା ତ ସେଟା ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ ର ପେନିଟ୍ରେଟ କଲା ହେଲା ଇନଅକୁଲେସନ ଇନଟୁ ଦ ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ ପେନିଟ୍ରେଟ କଲା ତ ସେଇଟାରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦବା ଭାଇରସ ଇନଫେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଡଗ ବାଇଟ୍ସ ରାବିସ୍। One example, hepatitis B as well as AIDS virus through infection the contaminated needles or syringe. जदि आमे गोटे इन्फेक्टेड पर्सन ठू आमे ब्लड टा आणुछु कि ये करूछु तो सेटा आउ जनक सुस्थ लोकन देहरे गले सेई माने येटा स्प्रेड हबो। तो सेति पई कि एग्जांपल देला म्यूकस मेम्ब्रेन भितरे जोटा जाउची सेठी भी हमकु सेई रोगटा कंटामिनेटेड हे जाउची। तो सेटा एग्जांपल दे देबे एड्स गोटे देबे हेपाटाइटिस बी देबे एड्स रे कहि देबे कि कंटामिनेटेड निडल्स और सिरिंज थ्रू रे जनकु होउची आ कालाजर जोटा ब्लैक फीवर बाइट ऑफ द सैंड फ्लाई इज ट्रांसमिटेड दिस वे। कालाजर टा केमती होउची ना गोटे माटी रे गोटे फ्लाई थाए सेटा एबे गोटे बाहरी थिला ए जो हमरो डेंगू परे गोटे माइट्स बाहर नथिला माटी भितरे रही के से कामुडी देले सेटा हमरो ब्रेन रो एन्सेफेलाइटिस भलिया होउची तो यस सेई मैम। भलिया बाहर थिला तो टिके ବାହାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମନା କରାହଉଥିଲା ମାନେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଅନି। ସେଇ ଭଳିଆ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ଲାଏ ଟା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ କାମୁଡୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଡେମିକ ହେଇଥିଲା ଏଟା ତ ସେଇଟା କାଲା ଆଜର ବା ବ୍ଲାକ୍ ଫିଭର ହଉଥିଲା ହେଲା ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ରହିଲା placental transmission. In case of pathogens can get into the placenta from the mother's body. It is the form of direct transmission. Rubella and herpes virus, hepatitis B, syphilis and AIDS are example of infection that can be transmitted placenta from the mother's body. तो ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन केमती से सेतोले पैथोजेन्स कैन बी गेट इनटू द प्लासेंटा फ्रॉम द मदर्स बॉडी हला मदर्स बॉडी को जो हमर प्लासेंटा टा थाए हला तो सेइथरे बहुत इजीली कारण गोटे नाही ओडे नाही संगे अटैच थाए तो सेठी भी ओपन रे थिले भी सेठी भी हमर हेपाटाइटिस बी हबार बहुत चांस थाए सेति पई से मानको सेफ्टी रे गोटे घरे रखा जाए।
तो आपण 5 प्रकार डायरेक्ट ट्रांसमिशन रे केंती हमकु इन्फेक्शन होउची आ सेथरे एक्यूट क्रोनिक फटल डिजीज आडको हम जाउचू तो एटा लिखिबे आ उडला इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन रे हम केंती एटा डायरेक्ट कांटेक्ट रे हमके ये इन्फेक्शन हला इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन रे केंती हबो समथिंग कैरीज आउट न्यू होस्ट फ्लाइज फिंगर्स फोमाइट्स फूड्स एंड फिशेस 5 एफ्स आपण क्वेश्चन आसीबो वन वर्ड रे व्हाट आर द 5 एफ्स एफ एंड एस हाँ 5टा एफ कौन आपण लिखिबे फ्लाइज हला गोटे हला माछी गोटे हला फिंगर द्वारा हमकु स्प्रेड होची आ गोटे हला फोमाइट्स हला जोटा कि हमकु सॉइल्स फॉल्स रु मिल जाए आ गोटे हला फूड आ गोटे हला फिशेस स्टूल हला ए 5टा एफ रु हमकु इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम रिजर्वर टू मैन स्प्रेड होची दिस कैन बी व्हीकल ब्रॉन दिस मींस एक्सक्यूज ट्रांसमिशन मी मैम हाँ मैम 5टा कहले फ्लाइज फिंगर फॉर्माइट फूड एंड फिशेस फिशेस स्टूल हला आज्ञा आज्ञा थैंक यू मैम एतिकी रे आपण वन वर्ड रे आसीबो एटा लिखिबे ततरे हला vehicle borne disease कोडा माने host ओडा this means transmission of the infectious agent through something which carry it like water ice food or different kinds of particularly raw vegetables fruits milk and milk products blood serum and plasma vehicle borne माने आमे कोन करबा ना पानी द्वारा इन्फेक्शन हबो आइसटा हमर जो रखा हुए आइसटा भी वाटर हार्ड फॉर्म टा आइस तो आइस रु भी स्प्रेड हबो डिफरेंट फूड्स लाइक रॉ वेजिटेबल्स रे बहुत कंटामिनेशन र चांस थाए हला सेति पे तुमको वेल क्लीन करूचु ताकू सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन रे रखुचु हल्दी वाटर रे रखुचु कारण से कंटामिनेशन होबार चांस थाए कारण फ्रूट्स मिल्क काहे की होबार चांस थाए ना जदी वेजिटेबल्स को जगह रे टिके खंडिया है कि रही कि तार ओपन होती से फ्लाइज बसीगला कि आउ कौन हाथ बाजिगला कि कହାର कौन ये है तो सहीटा को खाइले इन्फेक्शन स्प्रेड हुए फ्रूट्स गोटे रहा जमती कि आम अंगूर यू जिन ऊपर पूरा होल थाए से माछी बसंती तो फ्रूट्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रे हुए आउ रहा ब्लड सेरम एंड प्लाज्मा रे हुए है तो यहाँ है व्हीकल ब्रॉन मैम डिजीज हाँ मैम मिल्क रे केमती हुए खीर रे केमती क्षीर माने रे एटा हुए कंटामिनेशन बहुत जल्दी हुए कारण क्षीरटा बेसी समय रखिला परे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुअंती हला तो हला परे मिल्क अच्छा रे अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आज्ञा आज्ञा एटा कोन हुए कहले व्हीकल ब्रॉन माने कोन कहले को थ्रू रे हम देह भीतर को जाउची तो सेठी हुए देखिबे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट समस्त को माने लैक्टोज इंटॉलरेंस गोटे अछि सेटा भी समान को सूट करेनी तो जत्ते बेले नहीं समान नहीं जिंस नै जांदी संगे संग वॉमिट कर देंदी कारण बॉडी सेटा परमिट करेनी बॉडी बहुत एसिड सिक्रेट करे तो सेति पे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी व्हीकल ब्रॉन रो गोटे हमर पार्ट out biological product like tissues and organs for those water and food are the biggest culprits because of the universal uses amar actually main contamination sources hela pani au khadya खाद्य जदि खराब अच्छी कि कहार टच रे माने ये स्किन टू स्किन टच रे आसी कि खाद्यटा खराब हो जाइए तो आमको कंटामिनेशन करिवो पानी द्वारा भी हबो है The diseases spread by food and water are mostly infection of the gastrointestinal tract, diarrhea, typhoid, fever, cholera, hepatitis A, food poisoning, intestinal parasites, etc. etc. आपण हेटा लिखि देबे हला एटा सब लिखिले जाय कि हबो को व्हीकल थ्रू रे मेन हला व्हीकल हला पानी आ खाद्य वाटर एंड फूड तापर हला वेक्टर ब्रॉन एटा हला व्हीकल ब्रॉन वेक्टर ब्रॉन रे इज अ लिविंग कैरियर that carries an infectious agent to a susceptible person. This transmission may be mechanical or biological. In mechanical transmission, the vectors only act as the carrier of the pathogens. For example, infectious material getting stuck to the feet or proboscis of the fly and getting into the gastrointestinal tract and passing out the excreta into the food. धर गोटे माछी आसिक आप खाद्यटा रखिंट ओपन माछी आसला बसला से माने झाड़ा करदेला है तो आपण ताकू खाइले सेटा हला वेक्टर ब्रॉन आपण गले कोन हबो डायरिया हबो कलेरा हबो वॉमिटिंग हबो हला जीआई ट्रैक्ट रो डिजीज ओडा क्रिएट हबो gastrointestinal tracts and passing out to the excreta into the food item एटा हला वेक्टर ब्रॉन मशा माछी पोको जोकंग द्वारा जोटा हम बॉडी को जाउची खाद्य और पानी द्वारा सेटा हला वेक्टर बर्न हला तो आमे एग्जांपल दबा फ्लाई माछी
There is no development of multiplication agent or on within the vector and biological transmission. The pathogen pass through the developmental cycle of the multiplication. किछि एते लिखिबा दरकार नै, just example दे देबे flies when it's eat on our live food, then we will ingest in through the food, then we will get cholera, dysentery, diarrhea, etc. and etc. Then third one is airborne. There are two forms of airborne disease. One is droplet, whereas tiny particles of dried residue of droplets are formed either by evaporation of droplets, coughed, sneeze into the air, and aerosols accidentally micro laboratory. हाँ, two types of airborne are there. गोटे हला droplets जन sneezing, coughing, talking रे spread होची, आ गोटे हला chemicals ओडा जतबेले हम किछि smoke गोटे हला कि chemicals किछि जदी aerosols ओडा हम smell नेलु तो सेइथरे भी हमकु बहुत प्रकार डिजीज हेता. टू टाइप्स आर देयर. गोटे हला माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज रे जोडा रहुची एस्बेस्टस, ऑटोस्पिरूम्स, एरोसल्स एडा सब रहिला. आ गोटे हला ड्रॉपलेट्स हला स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा. अनदर मैम फॉर्म आउथरे कहंतु. मैम सेटा आउथरे कहंतु. ड्रॉपलेट गोटे आ गोटे कोन कहला? ए गोटे जो हला एयर बोन्स. हाँ, एयर ब्रोन रे जोटा हमरो रहुची गोटे हला ड्रॉपलेट. फॉर एग्जांपल लेखिबे स्नीजिंग, टॉकिंग, कफिंग एक्सेट्रा सेइथरो हम स्प्रेड होची. आ गोटे हला हमर माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरीज बा आपण लेखिबे केमिकल सेटा कोन पर्टिकुलर ये लिखिबे माने जोटा की रिएक्शन हेबो कि मैडम? केमिकल रिएक्शन केमिकल रो जोटा ऑर्डर टा हमें निज भीतर नो माने धरो स्मोकी एरिया हला हला कि छोटे धुआं हला कि हमरो इंडस्ट्री मानकरे जो स्मोक्स अराइज होची तो सेटा आ गोटे हला एरोजल स्मेल गोडा जोडा हला एस्बेस्टस एरोजल हाँ एरोजल सडा तो सेटारे भी हमरो ए सब डिजीज हमरो लंग्स रिलेटेड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एडा हुए. दी प्रकार गोटे केमिकल फॉर्म रे आ गोटे हला हमरो नेचुरल फॉर्म हला ड्रॉपलेट फॉर्म. Another form hella talking, coughing, sneezing, larger droplets settle down hella carpet, furniture, clothes, bedding, other immediate environment and become part of the dust. Many pathogenic bacteria, virus, spores and fungi are well squamous cells and एते लिखिया दरकार नहीं. लिखि देबे निमोनिया हुए. आ गोटेला थ्रोट इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस एडा लिखि देबे. आ जोटा एरोजल ये रे सेटा सब टिके सिवियर ब्रोंकाइटिस एडा सब हेथे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एडा सब हुए. आ आगे मैडम केमिकल ड्रॉपलेट आ गोटे की ड्रॉपलेट कहले? नेचुरल हमर ड्रॉपलेट ह्यूमन रिजर्व ड्रॉपलेट जोटा हमें स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग दे जाओ ह्यूमन ड्रॉपलेट. हाँ ह्यूमन ड्रॉपलेट्स रे जोटा स्प्रेड हुए. आउट हला फोमाइट ब्रॉन सेटा intimate articles or substances other than water or food which get infected by infection discharges from the patient which was harbor this infection agent and transfer them from another healthy person are called fomites. Food or water, the inanimate articles or substances other than food or water which can infected by infectious discharges from a patient. आमे धरो पेशेंट मानकर धरो कोविड टाइम रे तांकर जो स्नीजिंग, कफिंग जोटा हैला से माने जो जिंस यूज करिथिबे हला सेटा जदी कोनोसी कांटेक्ट गोटे पर्सन देरे आसिला हला ताकू कहंती फोमाइट बर्न. माने किछि गोटे ऑर्गेनिज्म जणे डिस्चार्ज करि देछि माने बाहरी जाइछि ता बॉडी रु आ सेटा आउ जणे नै कि यूज करले हैंड कीटा कोविड पेशेंट यूज करिछि मु ताउ नै यूज कर देली हला तो सेटा हला फोमाइट बर्न इन्फेक्शन. माने सेटा देखो तार ये हबो इन्फेक्शियस एजेंट्स that can transfer them from another healthy person are called fomites. हला गोटे इन्फेक्शियस पर्सन नो किछि मेटेरियल्स जदी if another healthy persons are used then it is called fomites. This includes soiled cloth माने तार अपरिष्कार क्लॉथ हला, टॉवल्स हला, लाइनेंस हला, हैंडकी हला, कप, स्पून, पेंसिल, बुक्स, टॉयज जहां से टच रे आसीथिबो बा सर्जिकल ड्रेसिंग्स रे जो सिरिंज यूज करथिबो. आमे जो सिरिंज ता वन टाइम यूज करिके पकोचू
तो सिरिंज यूज करथुबो तो सेथे हमको एड्स हबार चांस थाए एड्स सब फोमाइट आउ कोविड रे कले ताको कोविड हबार चांस थाए अस्थमा पेशेंट का अस्थमा हबार चांस थाए हला एटा सब फोमाइट ब्रोन डिजीज diseases transmitted by fomite including diphtheria typhoid fever हुए dysentery हबो hepatitis हबो eye skin infection हबो आउ किछि रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हुए हला ए एग्जांपल दे देबे बुझी जानती निज ओन लैंग्वेज रे लिखिबे था फिफ्थ वन ता हला सिक्स्थ वन ता हला अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स लास्ट भलो को लिखिबे ए क्वेश्चन टा भी ए बहिटार जेतिकी अछि सब इंपोर्टेंट अछि हला अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स हला माने हैंड हाइजीन जोटा अच्छी नीट एंड क्लीननेस एटा हला बहुत जल्दी स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शंस द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट टेक्स प्लेस infected fingers or directly by contaminating food water and vessels or lining infected hands सेथरे कोन हुए ना टाइफॉइड हुए डिसेंट्री हुए हेपाटाइटिस काना हैंड ता हला हमरो इन्फेक्शियस डिजीज रो मेन कॉज कहीं हैंड रे आमे हाथ धोई नथिबु सेठी भी किछि जदी हमर किछि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट थिबो खाद्य को छुइलु पानी भीतर हाथ मार देलु पी देलु तो इजीली पानीटा कोन करे ना स्प्रेड करिबारे बहुत सहाय्य करे हला तो सेति में अनक्लीन हैंड एंड फिंगर्स अपन लिखिबे बिफोर टेकिंग फूड बिफोर ईटिंग फूड वी हैव टू क्लीन आवर हैंड्स आफ्टर डिफिकेशन वी हैव टू क्लींस आवर हैंड्स and fingers we will cut our nails also we will clean our nails एरा सब लिखिबे आथरे unclean hands and fingers रे sanitation barrier रे food soil flies fingers water एरा सब वैक्सीन ऊपर लिखि सुनंदु मोड ऑफ एंट्री इनटू ए सस्पेक्टेबल होस्ट हैला तार मोड ऑफ एंट्री व्हाट आर द मोड ऑफ एंट्री इनटू सस्पेक्टेबल होस्ट आमे किछि जानि ना आमे हेल्दी पर्सन आमे केमिति गुटे 5 दिन परे मते गुटे फीवर आसिला तो सेटा हला मोड ऑफ एंट्री इनटू ए सस्पेक्टेबल होस्ट से केउ थ्रू रे गला मते जणा नै मु जदी क्लिनिकल डायग्नोसिस करिबी साइन सिम्पटम्स देखिबी टेस्ट सब पैथोलॉजिकल टेस्ट हबो then I can find out but I can know about the mode of entry of susceptible को host मो बॉडी को थ्रू रे गला है ना सेटा को थ्रू रे जाउची ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सेटा केमती जीवो स्नीजिंग कफिंग रे respiratory tract which involve the nose mouth throat and lungs airborne infections enter into through this route हमको को रूट रे जाए ना नोज माउथ थ्रोट लंग्स एटा अफेक्टेड करिवे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गोटे नंबर 1 हला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नंबर 2 हला गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सेटा को थ्रू रे जीवो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रे पानी रु जीवो पानी और खाद्य फूड एंड वाटर एटा हला एयरब्रोन एटा हला वाटर ब्रोन तो all pathogens that find their way into food and water or into the mouth of the host enter the human body सेथरे ले कोन हबो ना टाइफॉइड कॉलेरा डिसेंट्री डायरिया ए सब हबो then third one is genitourinary tract which involve the male and female sex organs genitourinary tract third ता जोटा mode of entry सेटा कोन हबो ना जेंति हमकु इंटरकोर्स करलो तो एड्स सिफिलिस गोनोरिया ए सब जिंसडा देखा जाए तो male and female both are responsible तो pathogen diseases like AIDS and syphilis enters into the root out fourth point hela skin the skin provides entry to infectious agents disease like leprosy scabies eczema ए सब जिनसडा स्किन रु गोटे हला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गोटे हला जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट आ गोटे हला स्किन आ गोटे हला म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज माउथ एंड नोज आईज माउथ एंड नोज धर गोटे मु एग्जांपल दउ गोटे कोविड पेशेंट ता स्नीज बा ड्रॉपलेट्स आपण ऊपर पड़िला तो आपण कोन करिवे ना सेटा को नै आखि रे माने आखिटा कुंडे होची कुंडे देले हला तो आखि रो इन्फेक्शंस निहाती हबो आउट रहिला पाटी रे हाथ कोन पई मार देले तो निहाती से होस्टा बॉडी को एंट्री कला आउट हला नाक कुंडे होची भीतरटा कुंडे देले तो आखि नाक आ पाटी तीनटा जाको जो रूटटा हमर ओपन थाए तो सेठी इजीली होस्ट कैन एंटर इनटू आवर बॉडी एंड कॉज इन्फेक्शंस राइट तापरे आपनकर गोटे हला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट गोटे हला गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट गोटे जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट आउट हला स्किन आउट हला म्यूकस मेम्ब्रेन माने जोटा ओपन जगाडा जोटा सहज रे पळाए
तो ओपन जगह जोटा म्यूकस मेम्ब्रेन हला आई माउथ नोज मोड ऑफ एंट्री कंजक्टिवाइटिस टा ओपन ये रे जीवो म्यूकस ये कोटा कहले म्यूकस मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस जो आखि धरा हाँ हाँ ସେଇଟା ବି ହବ ଆଖି ଧରାଟା ବି ଆପଣ ଯଦି ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାର କିଛି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ କିଛି ଆଣ୍ଟି ଫ୍ୟାଣ୍ଟି ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ କି ସେ ହାତରେ କୁଣ୍ଡେଇଥିବ ଆପଣ ତା ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେଲେ କି ହାତଟା ମାରିଦେଲେ ତ ଆପଣ म्यूकस मेम्ब्रेନରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ହୋଷ୍ଟଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ ହେଲା म्यूकस मेम्ब्रेन ହେଲା ଓପନ ଯୋଉଟା ଓପନ ଅର୍ଗାନ ସେଟା ଆଇ ମାଉଥ ନୋଜ ଯୋଉଟା କି ଇଜିଲି ସହଜରେ ସେଇ ପାଥୋଜେନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ଏଟା ବହୁତ ମହାମାରୀର ରୂପ ନିଏ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୁଏ ହେଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ଆସିବ ସ୍ମଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବେ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ସବୁ ଫଲୋ କରିବେ ଗୋଟେ ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ହେଲା ପରେ ତ ଆଉ ନେବେନି ବିଫୋର୍ ଯଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ଏଇସବୁ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁକି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିବେ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦ ଏଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସୋର୍ସେସ୍ ରିଜର୍ଭିୟର ୱିଥ୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଆଇଦର destroying it into the every point ସେଟା କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଦ ଏଜେଣ୍ଟ ସୋର୍ସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜର୍ଭିୟର ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ନା ଆମର ସବୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି WHO ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା କିପ୍ ଅଣ୍ଡର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ଲାଇକ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ HINI ଭାଇରସ୍ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ଇଏ ହେଇଛି ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁଟା ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଥିଲା କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ରନ୍ ଟାଇଫସ୍ ଫିବର ପାରାଲାଇଟିକ୍ ପୋଲିଓ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଏ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ସବୁ ପାଇଁ ଏବେ ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ଆସିଗଲାଣି ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ WHO ର ରୁଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନକୁ ଫଲୋ କରିବା अर्ली डिटेक्शंस एंड डायग्नोसिस ऑफ द केस एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट इज प्राइमरी इंपोर्टेंस प्रथमे आपण लिखिबे अर्ली डिटेक्शन डायग्नोसिस ऑफ द केस एडिक्वेट ट्रीटमेंट केमते हमें ताकू दबा देले ए जिंसटा स्प्रेड होबनी हमें ताकू केमते कंट्रोल करबा एजेंट को द एजेंट को सेही भलिया रे कंट्रोल करबा धर वाटरबोर्न डिजीज हमको हेची डायरिया कलेरा हेची हमें कोन करबा प्रिवेंटिव मेजर्स कोन हाथ धोई की खाइबा सफा पानी खाद्य नबा हला तो सेटा हेले आमु किछिटा मात्रा रे कमी जिवो तो कंट्रोलिंग एजेंट्स आउ आइसोलेट द पेशेंट्स और द इन्फेक्शंस फ्रॉम आमे आइसोलेट रखिबा हला आइसोलेट करी ताको गोटे अलगा जगह रे रखिबा माने जो माने एयरबोर्न डिजीज रे माने तांको हेची एयरबोर्न डिजीज माने अस्थमा बस्थमा जो माने होइतिबो तो आमे ताको आइसोलेशन रे आगे रखिबा हला तो रखिले कोन हबो ना से तार मु कहिछि ना एंटीबायोटिक्स ता केबे कोनसी होस्ट को मारेनी तार माने तार जत्ते की अछि माने कोन कहली पावर टा को कमेबा हला कमेला पर से निजे ही वीक हे डाउन हे जिवो तो सेही समय भितरे जेतोले ता पावर बहुत अधिक थिबो सेही टाइम रे तो से अन्य लोक को अफेक्ट कर दबो ना तो आमे से टाइम रे आइसोलेट हेकी पृथ्वीकरण भाबरे गोटे घरे आमे रहिबा द्वारा कौन हम ना जीवाणु जी दिन भाइरस माइक्रो ऑर्गेनिजम लाइफ स्पैन थी से दिन रही से डिस्ट्रॉय होला परे ताकि बाकी जन को इन्फेक्शन जमती न हो से आइसोलेट द पेशेंट्स और द इन्फेक्शंस फ्रॉम अदर आम गोटे आइसोलेट करदे गोटे पेशेंट को और द इन्फेक्शंस फ्रॉम द अदर्स को स्प्रेड न हो केमती आम कंट्रोल करवा एजेंट को है गोटे वैक्सीनेशन अर्ली ट्रीटमेंट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड अर्ली ट्रीटमेंट एटा isolate the patient or the infections from the others isolate कर दवा patient को जेंति के अन्य मानक को spread न हो that's important नहीं कि सब ये करंतु all utensils should be patient must be kept separate isolation रे रहिला माने utensils तांकर सब क्लोथिंग हला तांकर utensils हला तांकर जत्ते प्रकार यूज मटेरियल्स ओडा पूरा आइसोलेशन रे तांकरी पाखरे रहिबो तांकर मटेरियल्स को अन्य केही यूज करिवनी nobody should use the affected patients use materials तापरे contamination कमी जिवो all items of clothes paper cotton wool etc used to clean आपण दीटा लिखिबे गोटे आइसोलेशन गोटे अर्ली ट्रीटमेंट डिटेक्शन आ गोटे ट्रीटमेंट अर्ली हां अर्ली डिटेक्शन ऑफ द डिजीज तापरे तार प्रिवेंटिव मेजर्स तापरे तार अर्ली ट्रीटमेंट करिबा प्लस ताको आइसोलेटेड करिके रखिबा ताकि अन्य मानको को सेटा स्प्रेड न हो देन डिस्ट्रॉय द एजेंट ऑफ डिजीज एट द सोर्स और रिजर्वियर्स केमती करिबा ना डिस्ट्रॉइंग बाय हीट एट द टेम्परेचर हीट किल्स बैक्टीरिया वेरी फास्ट आमे केमती से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानको
destroy करिबा कहंतु आपण माने सब जानिथिबे एबे रिसेंट कोविड हरिका जाईची destroying by heat माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब बळे बहुत टेम्परेचर काहे कि हमें पानी टा फुटे की छानी की पिउचु काहे कि पिउचु ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म destroy हे जिवे ताकि आम बॉडी को से होस्ट टा स्प्रेड न करिवे हला सेति पई कि हमें हाई टेम्परेचर रे माने फुटेबा हीट किल्स बैक्टीरिया वेरी फास्ट माने हमर वाटर बोर्न डिजीज जोडा होउची टाइफॉइड हला कॉलेरा डिसेंट्री ए सब जिंस ओडा हमें कोन करबा ना वाटर बोर्न डिजीज पानी टा को जदि हमें हाई टेम्परेचर रे फुटेबा तेबे बैक्टीरिया को से वेरी फास्ट नष्ट कर दबा spores however may require longer exposure to heat moist heat is more efficient than dry heat because hot water or steam can penetrate both bacteria and spores most efficiently moist heat can apply by different ways boiling water 5 minutes in boiling water is enough to kill bacteria आपण यदि 5 मिनिट भी पानी को फुटेइबे तेबे से बैक्टीरिया को enough to kill the bacteria 20 minutes will kill nearly all spores and all dangerous to man जदि आपण 20 मिनिट एटा सब वन वर्ड रे आसी पारे हला एटा मन रखिबे 5 मिनिट बैक्टीरिया किल करिवो it kills the bacteria when we'll boil the water for 5 minutes and it will kill spores and dangerous जोटा हमर microorganism थाए जो which will affect our other organs then we will boil the water for 20 minutes जदि 20 मिनिट फुटे दोछु सब प्रकार spores fungus जहाँ भी थिबो सब नष्ट हो जिवो ता माने सबुट सेफ 20 minutes boil करिबा then boiling water pare second point hula pasteurization this is a method of killing certain pathogenic bacteria by very quickly heating the substance to a room temperature आमे पास्चराइजेशन कहा करूछु आमे जो ओमफेड मिल्क आनु जेटा कोन होची पास्चराइजेशन होची ऑलरेडी बॉइल्ड मिल्क तो मिल्क रे बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करंती क्षीर रे तो सेति पे सेटा बॉडी को जाई कि वॉमिट कराए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को अफेक्ट कराए हला सेति पे कि क्षीरटा को पास्चराइजेशन करी पैकेट करूची गवर्नमेंट तो pasteurization this is a method of killing certain pathogenic bacteria very quickly hitting the substance to a room temperature which destroy the organism without damaging the substance आमे धर क्षीरटा को pasteurization करलु तार एते जोरे जो 20 मिनिट आमे जो पानी को बॉइल करी के बैक्टीरिया मारलु तो एइटारे दरकार हुएनी pasteurization माने गोटे स्पेसिफिक टेम्परेचर रे आमे रूम टेम्परेचर जेंति गरम कला परे सेथरे न्यूट्रिटिव वैल्यू नष्ट हुएनी प्लस हमर पैथोजेनिक बैक्टीरिया जोटा रहुची तो सेटा नष्ट हुए सेति पई मिल्क को पास्चराइजेशन करा जाय लेखाइ छि दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जे कोन सी मिल्क प्रोडक्ट हमरो आसुची आईएस जो एफएसएसआई मार्क वाला तो सेइथरे कोन होची ना पास्चराइज फॉर्म रे मिल्क आइटम्स को करले सेते पैथोजेनिक डेवलपमेंट करेनी आपण जो सेइथरे पचतले काहे कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ना सेथरे पैथोजेन्स बहुत जल्दी डेवलप करे You are familiar with pasteurized milk, pasteurized flavored milk and pasteurized cheese. है ना cheese, milk, curd एड़ा सब को pasteurization हुए. Steam produced by boiling water for 100 degree centigrade. है ना at ordinary pressure in a sterilizer can kill bacteria in 20 minutes and more. मन रखिबे 20 minutes टा हला पूरा germless water germless सब रहिबो है ना तो 20 minutes more spores in 90 minutes when steam is produced under pressure can be done in a autoclave it can be destroyed autoclave देखथिबे माइक्रोबायोलॉजी लैब रे autoclave लखा जाय कारण सेतरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कला परे हमें उटे जिंस को फाइंड आउट करि थाउ तो autoclave रे कोन हुए ना destroy spores in 15 minutes रे autoclave भितरे किछि भी मटेरियल्स रखि देले जोटा कि हम यूज करूछु माइक्रोबायोलॉजी लैब पई की तो सेटा पूरा हमरो पैथोजन फ्री हे जाय and need to be dried with the help of hot and dry air content this sterilization can be normal sterilization हमें काहे की करू कारण स्पेशली हमें जिंस कहा को स्टेरिलाइज करू मेटल्स को स्टेरिलाइज करू यूटेंसिल को स्टेरिलाइज करू हला आ किछि ओडे जिंस हमर बॉडी रो यूज होउची जोटा तो हमर सेइथरे हमें ताको स्टेरिलाइजेशन करू हमर क्लोथ तोडा जोडा बारंबार यूज होउची ताको भी स्टेरिलाइज करू तो ये सब जिनस स्टेरिलाइज न कले सेत्र माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप करंती तो सुनंतु चारिटा हला गोटे बॉइलिंग वाटर गोटे पास्चराइजेशन को कहा करे करंती मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को स्टीम ता कोन करा जाय ना स्टेरिलाइजेशन टू किल बैक्टीरिया इन 20 मिनिट्स स्टेरिलाइजेशन हम सब करिवु
तापर तो हॉट ड्राई एयर रे आमे रखू सेटा ऑटोक्लेव रे हुए आउटला ड्राई हीट कोन कैन बी यूज्ड टू आइदर डिस्ट्रॉय द इंटीमेट सोर्स ऑफ रिजर्वियर or to sterilize it is simple. It can be done by burning, which is the best and simplest way to destroy infected material. By burning, which is the best and simplest way to destroy infected materials. हाँ burning टा कौन धर आमे आमर कोविड हला कि आमर टीबी वार्ड रे जते कि पेशेंट अछंती तो सेमानकर जो यूज्ड माने ड्रेस हला कि तांकर यूज्ड किछि भी मटेरियल्स हला तो सेटा जल्दी इन्फेक्शन हे जिवो तो सबुटु सेफ हला तांको जिंस को माने पोड़ी देले माने हमरो पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा नष्ट हो जिवे हला तो बर्निंग व्हिच इज द बेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड मटेरियल्स जो मटेरियल्स यूज करथुए काले अन्य कहा पाखु पळेइबो काले अन्य कहा माटी रे सॉइल रे रहिले भी इन्फेक्शन हबो सॉइल थ्रू रे जो इन्फेक्शंस होउची जदि से मटेरियल्स को से सॉइल रे पके दबो कि माटी रे पके देले कि बाहर कोड फोपाड़ देला तो आमे जदि गोटे हेल्दी पर्सन से सॉइल कांटेक्ट रे आसिला सी भी इन्फेक्टेड हबो तो सेति पई कि ताकू सबुटु बेस्ट वे डिस्ट्रॉयड इन्फेक्टेड मटेरियल्स इज बाय बर्निंग जदि आमे बर्न करि दबा तो सबु जाक इन्फेक्शन डिस्ट्रॉय हे जिवो by using hot air which kills bacteria but not always very efficiently since it does not easily penetrate the body of the material sustainable sterilized glassware metalware एडा सब हुए तो हॉटवेयर रे भी हमर हुए हॉटवेयर रे भी तो स्टेरिलाइजेशन करा जाए किंतु जदि किछि इन्फेक्टेड पर्सन जोटा कि हमर महामारी भलिया ये रे बहुत जल्दी जल्दी स्प्रेड होची तांको मटेरियल्स को सबुटु बेस्ट हला बर्निंग नले हॉट एयर ये रे destroying by drying. Meningitis are quickly killed when allowed to dry. Many bacteria wherever is tuber bacilli can live long in dust and spores can survive drying almost destroying with sunlight. आउ देखिथिबे सनलाइट रे भी बहुत जिंस रखा जाए द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन कैन किल मेनी बैक्टेरिया सेति पई खरा रे आमे सब चावल धान हमर सब होल येडा सब सुखौ कारण से अल्ट्रावायलेट रेज जत बळे आसे धान सुखा जाए तो से सब जिनसरा किल मेनी बैक्टेरिया इन आवर कंट्रीज दिस इज द वन ऑफ द कॉमन वे टू डिसइंफेक्ट आर्टिकल्स व्हेन द इन्फेक्शन इन्वॉल्व इज नॉट टू डेंजरियस इन अ लैटर केस मोस्ट स्ट्रिंगनेंट टेक्निक्स हैव टू बी एम्प्लॉयड माने सेटा हमर किछिटा जिंस जोटा कि माने एटा पूरा जेंती हमर बॉइलिंग वाटर रे स्टेरिलाइजेशन रे जेंती यूज होची सेंती न हेले भी सनलाइट रे जतोले बहुत जोरे माने जेंती खरा बळ खरा तो जोथरे बहुत जोरे माने खराटा काटे सेही टाइम रे किछि गोटे जिंस सुखेइले कि हम कपड़ा सुखौचे सब सुखैचे काई सुखौचे कारण सूर्यंको किरण माने सूर्यंको ये रे खरा रे जदी हम कपड़ा सुखौचे हमर बहुत बड़ा बैक्टीरिया पैथोजेन सेटा सब नष्ट हो जाए सेति पई हमर आगुरु तो एते सब मेशिनरीज नथिला हम कोन करथुलु आइदर गरम करिके बॉइल कर दोथुलु नले खरा रे सब पके दोथुलु किछि दिन परे देखिबे ट्रेडिशनली सब लोक जाय कि तांकर माने यूज जो माने जो कपड़ा सब रखतंती खरा सब दियंती सब जिंस खरा दियंती गदी तकिया सब मटेरियल सब खरा देले एटा बहुत बड़ा बैक्टीरिया को से नष्ट करते तेणु कर आपण लिखिबे डिस्ट्रॉइंग विथ सनलाइट गोटे रीजन destroying with chemical disinfectants and antiseptic. Disinfectants kill microorganisms, whereas antiseptic only inhibit their growth without destroying them. एंटीसेप्टिक हो कि एंटीबायोटिक हो केबे कोनोसी होस्ट को केबे कोनोसी पैथोजेन्स को मारी पारंती नाही केवल तांकर ग्रोथ को बा तांकर जेतिकी पावर थि सेटा कमे देबे ग्रोथ माने पावर माने कोन तांकर पावर केते बेले बढ़े जेते बेले सन मल्टीपल हे जानती सेते बेले समान गोटे एते बड़ पावर हे जाए से अलगा मल्टीपल ऑर्गन्स डाई फंक्शन करंती कि नष्ट करंती जेते बेले तांकर ग्रोथ टा को हमें कमे दबा एंटीबायोटिक्स थ्रू रे ये रे तो से माने धीरे धीरे डाउन हो जानती है तो सेति पे से लिखिला एंटीसेप्टिक ओनली इनहाबिट देयर ग्रोथ तां ग्रोथ को कमे दबो विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम तांकू कहीं मारि होस्ट को आज कहीं मारि नांती कि कोनोसी प्रूफ भी हैनी कि कोनोसी बाहरी नि जिंस तो आमे तांकर केवल ग्रोथ को स्टॉप कर देले से वीक हे जिवो many of the disinfectant like toxin from the human body and therefore they have limited use in the case of human reservoirs they can also acids alkalis is weak solution or good antiseptic not enough to disinfect तापरे आमे कोन करू ना
ओजोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड आम सब एंटीसेप्टिक रे कौन कौन यूज करूँ एंटीसेप्टिक रे आम मोस्टली यूज करूँ कौन ना आमर जमती कि सोप्स आर द बेस्ट रिमूविंग पैथोजेनिक आमर सबुठु कॉमन है कौन साबुन बा हैंड वाश आम जोटा कहूँ हैंड वाश आम करवा तो आमर सोप सॉल्यूशन कॉमनली समस्त को मिल जाव तो सेटा सबुठु बड़ क्लीनिंग एजेंट जदि आम नेचुरल देखा कौन कर वी विल यूज बेसन अटा तो सेटा भी आमर बॉडी रू माइक्रो ऑर्गेनिजम नष्ट करे किंतु सोप सॉल्यूशन टा हाइड्रोजन पेरोक्साइड थाए तो सेटा पैथोजेनडा सब नष्ट हो जाती ओजोन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज द पावर टू रिलीज ऑक्सीजन मींस स्टेरिलाइजिंग सोप्स आर द बेस्ट रिमूविंग पैथोजेनिक organism alcohol in the form of methyl spirit surgical spirits used to hospital sterilizing instrument तो आमे कौन करू ना सर्जिकल स्पिरिट्स नहीं कि आमे कौन करू इंस्ट्रूमेंट आमर जहाँ यूज करू डिवाइसेस जमती ऑपरेशन थिएटर रे हो ये हो से माने कौन करती ना अल्कोहोलिक सॉल्यूशन रे करू आमे जो हैंड सैनिटाइजर यूज करूछु सेटा कौन अल्कोहोलिक सॉल्यूशन सेतरे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम डेवलप करि पारंतिनी सब नष्ट हो जाती है ना तांकर ये कमी जाए तो सेतिपाई कि अल्कोहोलिक फॉर्म ऑफ मिथाइल स्पिरिट्स गोटे सर्जिकल स्पिरिट्स इन हॉस्पिटल्स आउ घरे आम यूज करछु सोप सॉल्यूशन आर द बेस्ट रिमूविंग मोस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम स्किन रू कोल्टर डेरिवेटिव्स such as phenol and cresols as well as crude carbolic acts are disinfectant तो फिनाइल कार्बोलिक एसिड क्लीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम इन अबाउट 20 मिनट्स प्योर फिनाइल जोटा कार्बोलिक एसिड्स ये सब जिनसटा माइक्रो ऑर्गेनिजम माने नष्ट कर दियंती जेमति कि आमे फ्लोर रे पकेदेलु फ्लोर रे माइक्रो ऑर्गेनिजम डेवलप करिवे कि आमे जोठी लैट्रिन यूज करूछु बाथरूम यूज करूछु सेठी आमे फिनाइल यूज करिवा कार्बोलिक एसिड यूज करिवा खाइबा पूर्व सोप सॉल्यूशन यूज करिवा आ हॉस्पिटल्स मन करे आमे कोन करिवा ना हमर अल्कोहोलिक सॉल्यूशंस जोटा माने हमर सर्जिकल से सब यूज करिवा हला removing the agent of infection by filtration filters with sufficiently small pores can hold back bacteria but not all viruses when liquids are passed into them these filters are made to different materials like diatomaceous earth unplugged proclaiming asbestos fine unplugged hold back viruses filters are used to common filtering water purity फिल्टरेशन हम जो यूज करूछु घरे एक्वागार्ड यूज करूछु प्योरिटी यूज करूछु है ना तो सही सब रे फिल्टर्स आर सफिशिएंटली स्मॉल पोर्स कैन होल्ड बैक बैक्टीरिया बट नॉट ऑल वायरसेस हम वायरसेस सब करि परनी किछि हमर बैक्टीरिया पैथोजेन से सब को किछि कंट्रोल ले रखू सबटु भलो तले आपण एठी कोन जानिले ना बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनिट्स जदी आपण से जो एक्वागार्ड हो कि ये सब जिनस हो यूज करबा अपेक्षा तादरे आमे वायरस को कंप्लीटली मारि न थाउ किंतु जदी बॉइलिंग वाटर 20 मिनिट्स बॉइल करिक आमे नोचे तेबे इट कैन किल्स मोस्ट ऑफ द पैथोजेन्स बैक्टीरिया एक्सेट्रा एटा आमे पूरा कंफर्म माने पूरा श्योर हे जिबा कि एटा पैथोजेन फ्री हल्ला तापर जदी आमे त खोला रखि देबो थरे बॉइल कर दी खोला रखि देलु ये कलु से अलगा ताको घोड़े की रखिबे हाथ भितरे मारिबेनी एमती कले आपण पैथोजेन फ्री पाइबे किंतु ए सब जो हमरो मार्केट एरिया रे जे सब जिंस तादरे कंप्लीटली माने ये हुअंतिनी एटा भी लिखिबे प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन आमे केमती प्रिवेंटिंग मेथड केमती यूज करबा इन्फेक्शन स्प्रेड न होबा पे ना इनडायरेक्ट कांटेक्ट द डिजीज वी स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट जानले तो स्नीजिंग कफिंग टकिंग एडा सब सॉइल रे हाथ मार देले ये कले पढिथिलु डायरेक्ट कांटेक्ट रे जो जिंसडा प्रॉपर वाशिंग ऑफ हैंड्स एंड फेस आइसोलेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम अदर कौन करिबा ना प्रिवेंशन केमती रखिबा खाइबा पूर्व हाथ धोइबा डिफिकेशंस आफ्टर डिफिकेशन वी शुड क्लीन आवर हैंड इन सोप सॉल्यूशन तापरे आइसोलेट द पर्सन्स हु आर इन्फेक्टेड थ्रू सर्टन डिजीजेस जेमति कि एंडेमिक डिजीज जेमति रहला कोविड अस्थमा ब्रोंकाइटिस समान को आइसोलेट करिकी रखिबा सो दैट द इन्फेक्शंस मस्ट बी कंट्रोल्ड तापरे रहला इनडायरेक्ट कंटामिनेशन ट्रांसमिशन जोड़ा सब रहला तो सेडा सब हमें कौन करबा ना यूटेंसिल्स लाइलेन सिरिंज ए सब जिनसडा हमें पूरा डिस्ट्रॉय कर दबा कि से जो यूज मटेरियल्स ऑफ पेशेंट्स we should burn them okay then आउटे हॉट एयर रे गोटे अछि कि burning टा is best गोटे रहिला ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस
wearing a mask हाँ आमे कौन करिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन केमते रखिबा एटा आपण कॉमन जिंस सब जानिथिबे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रखिया कहले डिस्टेंस मेंटेन करिबा मास्क यूज करिबा हैंड सैनिटाइजेशन बाय हैंड वॉश करिबा होला एयरबोर्न ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंट्रोलिंग सोर्स बाय यूजिंग एयर फिल्टर्स एयर स्टीम इन हॉस्पिटल डस्ट कंट्रोल क्लीनिंग एंड डस्टिंग एते जिंस हमको मे भी मिली न पारे एयर कंट्रोल एयर इन्फेक्शन एरा कोड मिलिबा हमें सबटु बेस्ट मास्क यूज करिबा Vector-borne infections can be controlled by eliminating the vectors like ticks, fleas and mosquito. Vector-borne रे जोटा हमर रहुची जोटा जीव जंतु ठू हमर आसुची तो सेइथरे हमर जो मुंडटा सफा रखिले हमको मे बी लाइसटा इन्फेक्शन हबनी पुणी हबनी देह हाथ सफा रखिले चर्म रे गोटे हमर इन्फेक्शन हबनी स्प्रेड हुए तो सेटा हबनी आ मस्किटोज में मस्किटो नेट व्यवहार करिबा तो वेक्टर बर्न डिजीज रु हमें प्रिवेंटिव मेजर्स हला वेक्टर बर्न पई कि हमें कोन करिबा हेयर क्लीन रखिबा स्किन क्लीन रखिबा मस्किटो नेट यूज करिबा आ एनवायरनमेंट क्लीन रखिबा वेक्टर बर्न इन्फेक्शन को प्रिवेंटिव मेजर्स एयर बर्न पई कोन करिबा ना यूजिंग ऑफ हमर मास्क आ गोटे रहिला हैंड शुड बी क्लीन बिफोर टेकिंग फूड आफ्टर डिफिकेशंस एटा करिबा आ रहिला इन डिजीजेस स्प्रेड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वेयरिंग मास्क हे गला इनडायरेक्ट कंटामिनेशन रे जोटा यूज प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंट्स बा पर्सन्स तांकर यूटेंसिल्स हो क्लोथ्स हो सिरिंज हो इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड इन डिजीजेस स्प्रेड बाय कांटेक्ट एतिक लिखिबे केमति प्रिवेंशन प्रिवेंटिव मेजर्स नेबे एटा सब आपण आराम से लिखि परिबे एबे तो बुझी गलेनी एसो लिखि परिबे आउ गुटे पढि दबा प्रोटेक्टिंग द होस्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीजेस केमिति हमें प्रोटेक्शन नबा होस्ट थ्रू इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस रे हाउ विल यू प्रोटेक्ट द होस्ट फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज हमें तो केमिति स्प्रेड माने रखिबा कोनतो एटा सिंपल जिंस कोन करिबा स्किन टा को क्लीन रखिबा आई सेक्रेटियल शुड बी वॉश अप विथ माइक्रो ऑर्गन फ्रॉम द आई नाइन नोज नासल सलिया एंड फिल्टर इनटू द एयर गोज ऑन ब्लैंकेट्स म्यूकस एंड प्रोटेक्शन एते जिंस लिखंतुनी जस्ट सिंपल लिखिबे प्रोटेक्शन ऑफ होस्ट फॉर इन्फेक्शन केमिति हम बॉडी को जाउची थ्रू वाटर एंड फूड वाटर एंड फूड रु जदी कंटामिनेशन हेके जाउची हमें फास्ट कोन करिबा वी शुड बॉईल द वाटर फॉर 20 मिनिट्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक फ्री वाटर से पानी जदी पीबा पैथोजन होस्ट आउ हम बॉडी रे स्प्रेड हबनी आ फूड देखिबा जदी किछि ओपन फूड अछि ताकू हमें भलरे सोक करिबा ताकू वॉश करिबा ताकू भल से क्लीन कला परे ताकू नबा आउ जदी किछि सड़ी जाइछि सेल फूड कि फ्लाइज आर सेटिंग्स ऑन द लाइव फूड तो सेई सब जिंस को हम अवॉइड करिबा एई सब फास्ट कले हमें होस्ट को निज भीतर को नहीं पारिबानी आउ रहिला स्किन ऊपर जोटा होउची सबु बेले हमें जो जॉइंट्स जगह मन करे अंगूठी संधि हो कि जंघ संधि हो काक एई सब जिंस को हमें नीट एंड क्लीन रखिबा ड्राई रखिबा तो सेतरे फंगस इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शंस हबनी आउ रहिला आखी को क्लीन रखिबा नाक को क्लीन रखिबा हला भल करी मुह दांत एडा सब क्लीन रखिबा कारण एटा हला तीनटा मोड ऑफ ट्रांसमिशन हला हमर आई नोज एंड माउथ माउथ रे हमें कोठोडे हाथ मारी माउथ रे हाथ मारले कंटामिनेशन हे जिवो नाक रे हाथ पुरै देले संगे संग हमर सेई लंग्स इन्फेक्शन माने बहुत जल्दी बॉडी को स्प्रेड हबो आखि रे मध्य हमर आखि रो इन्फेक्शन सेटा जो स्प्रेड हबो तो एई सब जिंस को सब बेले नीट एंड क्लीन रखिबा आ जदि काहा को सेंति इन्फेक्शन डिजीज हेछि तो मास्क यूज करिबा हमें डिस्टेंस मेंटेन करिबा हला आउ खाद्य पानी एटा तो कुहा हे गेला तो एई सब जिंस हला प्रोटेक्टिंग द होस्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज हम भीतर को एंट्री केमति न करिवे हमें सेटा प्रिवेंटिव मेजर्स नबा गोटी होला
मैडम को क्लास ओवर हो गला। मैडम तो नाहंती बोधे। ताले क्लास ओवर हो गला बोधे मैडम नाहंती कि मैडम किसी जणैलेनी एनीवे आसिलेनी मैडम आसी पारंती हुए तो 20 मिनिट अच्छे आरे आसी पारंती आसिलेनी मैडम मैम बोधे कॉल रे अछंती बोधे। हां हेतु मैडम को कंटिन्यू हबो ना आज क्लोज कर देबे। हेलो हेलो हां हेलो ऑडिबल होची तो आज्ञा मैडम हां ऑडिबल हेलो हेलो हां मैडम सुना जाउची ऑडिबल मैडम ठीक अछि तबे एक्टिव इम्यूनाइजेशन हमरो देखिबा है ना गोटे तो एई सब जिंस हमें कंट्रोल ले रखिले हम होस्ट हम बॉडी को एंट्री करि परिबनी। सेकंड वन इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन मध्य दरकार धर हमर टिटेनस पाई कि हमर किछि खंडिया हे गला कोन हैला हमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन कले सेटा कोन करिवो ना इम्यूनाइजेशन कोन करे सेई सेम हमर होस्ट मानु को डेवलप करिया को बा तांकर माने ग्रोथ हबा को दिएनी तो जाफले से वीक है से इम्यूनाइजेशन निहाती दरकार तो इम्यूनाइजेशन टू कंट्रोल इन्फेक्शन लाइक पोलियो टिटेनस डिप्थेरिया मिजल्स सबु पाई कि हमरो एक्टिव इम्यूनाइजेशन आसी जाउची तो हमें सेटा माने एज पर WHO गाइडलाइंस रे हमें इम्यूनाइजेशन बा हमें ए सब जिंस नबा कथा नेले पोस्ट माने हमरो करि परिबे ओ हॉस्पिटल vaccination against some of the most common diseases that attack human beings in infancy early childhood जोटा कि पोलियो हला कि डिप्थेरिया हला ए सब जिंस पई कि हेपाटाइटिस पई कि हमें अर्ली चाइल्डहुड रु मध्ये एरा सब रखितो बीसीजी पोलियो हमर गोटे वैक्सीनेशन रो गोटे ये लाइछि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन रैबीज वैक्सीन कॉलेरा वैक्सीन बीसीजी डिप्थेरिया क्लास तो ये सब जिनसडा हमर वैक्सीन आसी जाउची
तो सेटा भी हम होस्ट मानक हम प्रोटेक्शन ना ना मु सुनिबिनी से काहे कि ऑन काहे कर हेलो तुम्हें इग्नोर बंद ना एमती बंद करले बंद हो जाए हेलो मैडम कंटिन्यू करନ୍ତୁ हेलो आगे मैडम ऑडिबल आपण कंटिन्यू करନ୍ତୁ हां हां तेबे एबे देखिबा वाटर सप्लाई एंड वेस्ट डिस्पोजल सेटा सब कोन वाटर सप्लाई एंड वेस्ट डिस्पोजल तो आमे सेटा देखिबा सेइथरे हमर कोन होउची ना सोर्सेस ऑफ वाटर आमे को सोर्स रु पानी पिउचे को सोर्स रु यूज करूचे गोटेला पॉन्ड गोटेला रिवर गोटेला वेल गोटेला ट्यूबवेल बहुत वैरायटी सोर्सेस रु आमे पानी आनु माने सोर्स ता हमर अछि What are the various natural sources of water? हमर natural sources of water कोन रहउची कहले गोटे हला वर्षा पानी रेन वाटर नेचुरल पॉन्ड माने जोटा हला हमर समुद्र सेटा तो नेचुरल सोर्स तो सेटा हमकु किछि करिया को पड़ेनी तो नेचुरल सोर्स रे हमकु से माने असंती तो ओशन सीज रिवर्स लेक स्प्रिंग्स वाटरफॉल माने हमर झरना ठु आरंभ करी जत्ते प्रकार हमर 75% हमर जंती वाटर अछि तो बहुत नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर अछि ग्लेशियर्स स्नो कैप माउंटेन रेन पॉन्ड्स ग्राउंड वाटर एक्सेट्रा तो हमर सेटा नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर रु तो ग्राउंड वाटर सबसरफेस कंप्राइजिंग ऑफ वेल एंड स्प्रिंग्स हाउ मेनी ऑफ these sources are potable water तो एई भले हमर जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर रे हमन कोन हुए ना हमें सेई सोर्स रु हमर हाइड्रोलॉजिकल और वाटर साइकिल हुए तो वाटर साइकिल तो आपण माने जानि थिबे जेमति कि ग्राउंड वाटर फ्लोज ओशंस तापर एवापोरेट हे कि पुनी वर्षा रेन हुए तो सेई भलिया भाबरे हमकु नेचुरल प्रोसेस ऑफ वाटर ता मिल जाय why do our groundwater suppliers need to be protected what is the salinity factor why is water become scarce तो आमे जेति कि हमर the same things happen when large areas of lands are cleared or forest जेतबेले आमे जंगल काटू जेतबेले आमे जंगल को काटी दो आ गच्छ सेति कि इकोलॉजिकल बैलेंस हुए सेई टाइम रे हमर नेचुरल रेनफॉल्स कमी जाए आ सब नई हमर जेते सब नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर ना माने सेटा हमर बैलेंस ही पारेनी तो सेति पई कि हमर गच्छ रहिबा निहाती जरूरी तो लैंड आर क्लियर जो फॉरेस्ट को हमें बंचे के रखिया दरकार then thin soil is then directly exposed to rain when consequently penetrate much deeper into the ground eventually the land can become a water lost and saline this is why soil salinity land that became unfit for agriculture तो बहुत प्रकार जिनसे इकोलॉजिकल बैलेंस हमें पानी जति की गच्छ सेति की तो सबु एनवायरनमेंट रो इंटरलिंक रहिले जाय कि हमकु पानी भी मिलिबो प्लस सबु प्रकार हमर जति की माने हमर ऑक्सीजन दरकार जति की पानी दरकार माने जति की हमर फ्रेश एयर ए सब जिंसोडा हमकु बैलेंस करी के रखिया को पड़िबो आमे यदि पानी सबु जिंस हमें क्रिएट करिबा कि खोलिलु कि पॉन्ड्स ये एडा सब कलु जदि गच्छ सेति की नथिबो तो से अनुसार बैलेंस होबनी इकोलॉजिकल बैलेंस तो एटा तो सब नेचुरल प्रोसेस ऑफ वाटर लिखिची तापरे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इरोजन एंड फ्लडिंग रेन वाटर डोमेस्टिक लेवल रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग मध्ये होची तो सेथरे हमें कोन करू टेक्निक फॉर कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द रेनफॉल यूटिलाइजिंग द रूफटॉप ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग इंडस्ट्री एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हमें कोन करू जतबेले वर्षा दिन आसे कि रेनी सीजन आसिला सेठी हमें रेन वाटर को रिजर्व करी के रखू तो सेटा पई कि रूफटॉप ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस थ्रू रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग वेरी ओल्ड प्रैक्टिसेस required importance nowadays in view increasing water needs तो सेटा स्टोर करी रखिले हमकु पानी रो जो डेफिशिएंसी आजिकली होउची कारण जंगल कटा हे जाउची ये होउची बैलेंस होउनी तो सेई जगह पई कि हमें रेन वाटर को स्टोर करी के रखुछु देन बी हला कम्युनिटी लेवल large catchment areas are used in rural areas for collection of surface runoff the village ponds and reservoirs by drain pipes and depicted in figure below तो हमें कौन करछु ना कैचमेंट एरियाज फॉर कलेक्शन ऑफ हां आ गोटे जगह रे कौन करछु रेन वाटर दैट इज हार्वेस्टेड कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग डोमेस्टिक इरिगेशन इंडस्ट्रियल पर्पसेस एक्सेट्रा हमर भी
माने रूरल एरियाज मानकरे से माने सबू माने छोट छोट जगह रे खोली की मध्य पानी करि थांती ये रे तो सेटा रेन वाटर हार्वेस्टेड ड्रिंकिंग आ रेन वाटर टा एते प्योर फॉर्म रे थाए सेटा ड्रिंकिंग रे डोमेस्टिक यूज रे हमर जम्मी जो इरिगेशंस पाएंगे इंडस्ट्रियल पर्पजेस पाएंगे मध्य हुए तो very clear that importance of harvesting the rainwater by augmenting water resources in order to meet every increased demand तो हमर जति कि पानी डेफिशिएंसी होची कि एई सब जिंस रे माने जोटा हमकु सेफ वाटर हमकु जोटा दरकार सेफ वाटर इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ तो सेटा सबुटु प्योर फॉर्म वाटर इज रेन वाटर तो सेति पय कि तार हार्वेस्टिंग फॉर्म रे डोमेस्टिक लेवल रे रूफलेस रूम रे रेन वाटर को स्टोर करी के रखा जाउची फॉर आवर डोमेस्टिक पर्पजेस देन अर्बन ड्रिंकिंग एटा रूरल फॉर्म रे मु कहली माने जेमती कुओ गाडिया कुओ नै गाडिया ए सब जिंस से माने खोली की रखी थांती सेइथरे भी खोली की रखले भी रेन वाटर भी स्टोरेज हुए अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम कोन कोन आपण जानिथिबे अर्बन एरिया रे केन सब सेफ वाटर सैनिटेशन नीड प्रायोरिटी अटेंशन सेटा केमती हुए ना सच एज फॉस्फेट्स गैस सच एज ऑक्सीजन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटा सब हमर कोन हुए एक्वाटिक चॉइस potable water should be safe and purifying सेटा कोन हुए large scale purification of water groundwater cannot be solve the requirements of big cities and urban settlements where to purifying the fresh water from surface water bodies like river and supplying this water in the device बहुत बड़ बड़ जोटा नई फई थाए तो अर्बन ये पाई कि सेटा सप्लाई हुए हमर अर्बन एरियाज रो जते सब हाउसेस अच्छी इंडस्ट्रीज अच्छी ए सब जगह मानकू हमर को पॉन्ड्स रिवर सीज ए सब रु सप्लाई हुए ताकू प्यूरिफिकेशन करा जाए सेटा कोन लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर द अर्बन वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर किंतु रूरल एरिया रे कोन हला से माने पॉन्ड्स खोली देले बा गाडिया पोखरी ए सब खोली के से यूज करले नहले रेन वाटर को से स्टोर करी के रखले हैला आउ अर्बन एरिया मानकरे जेहेतु तांकर सेति की जागा नहीं तो से माने कोन करंती ना से जो हमर बड़ बड़ नई अछि जो वाटर रिसोर्स जिंस रु से माने सप्लाई करी कि ताकू लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर्स करंती द अर्बन वाटर सप्लाई केमती प्यूरिफाई करा जाए ना सेडिमेंटेशन बाय स्टोरेज ए क्वेश्चन टा बहुत इंपोर्टेंट अछि sedimentation of storage water is collected from the source either in natural or artificial reservoirs आमे natural form रे आणुबु कि artificial source रु माने जोटा बोरिंग हे के आसे तो जहां भी आमे सेटा खोलेलु process of storage itself allows considerable purification केमती हुए 90% of suspended impurities settle down in 24 hours आपण तो जानथिबे sedimentation जेमती पानी आ ये माटी एमते रखिला परे धीरे धीरे तार से माटी ये सबू सेडिमेंट हेकी तळे बसी जाए ऊपर क्लियर वाटर देखा जाए तो सेति पई कि से माने सेडिमेंटेशन बाय स्टोरेज जेमती से माने आर्टिफिशियली बोरिंग करले नहले नेचुरल हमर जो पोखरी नई सब अछि सेठरू जदी आनिबे 90% सस्पेंडेड इंप्योरिटीज सेटल डाउन इन 24 घंटा भितरे इंप्योरिटीज सेटल हेकी ऊपर क्लीन वाटर रहे तो anaerobic organism oxidize the organic matter in the water the pathogenic organism gradually reduce in number up to 90% during storage of 5 to 7 days तो pathogenic organism जोटा हेलाडा purification जेहेतु होची तो pathogenic organism reduce in 90% reduce करी जानती storage करी कि 5 to 7 days रखिले longer storage में allow growth of plants like algae यदि बहुत दिन हमें storage करी रखिबा धीरे धीरे से जो green green रो algae जोड़ा सब रुहे सिउली टाइप रो सेटा डेवलप करे तो फिल्टरेशन आउटला सेडिमेंटेशन ऑफ स्टोरेज यूज करके अर्बन एरिया को जाए आउटला फिल्टरेशन ने 98 to 99% ऑफ डिजीज कॉज यूजिंग द इंप्योरिटीज फिल्टर्स बायोलॉजिकल स्लो सैंड फिल्टर्स मैकेनिकल रैपिड सैंड फिल्टर्स गोटे हला स्लो सैंड फिल्टर्स रे धीरे धीरे से फिल्टर हे की सेटल हे की हुए आउटे मैकेनिकल और रैपिड सैंड फिल्टर्स सेटा फिल्टरेशन पे यूज हुए थर्ड वन हला क्लोरिनेशन क्लोरिनेशन माने क्लोरीन रो जो टैबलेट्स हमर आसे सेटा हमर वाटर को प्यूरिफाई करे गवर्नमेंट से सब ऑर्गेनाइजेशन जाई कि जो जोटी कॉलेरा डायरिया जोटा एंडेमिक बहुत स्प्रेड हुए डिजीज सेठी से माने क्लोरीन बटिका नै कि बा टैबलेट्स नै कि पानी रे पकेला माने प्यूरिफिकेशन हे जिवो तो सेटा क्लोरिनेशन किल द पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट हैज नो इफेक्ट्स ऑन स्पोर्स एंड वायरस पोलियो हेपाटाइटिस वायरस ए सब ऊपर किछि हुए नै खाली पानीटा को से क्लीन करिवो ऑक्सीडाइजेस आयरन मैंगनीज हाइड्रोजन सल्फाइड ए जो मेटल्स गोडा पानी रे रहउची सेटा हमर ऑर्गन्स को डायफंक्शन कराए बा हमर जोटा फिल्टरेशन ऑर्गन कोटा ना किडनी
तो किडनी एते सारा मेटल को जमा एक्सक्रेट करि पारेनी तो सेति पई कि जदी किछि हमर मेटल्स रहउची हमर मिनरल्स जोडा रहउची जो मिनरल्स ऊपर हेवी मिनरल्स जोडा जोडा कि किडनी माने एक्सक्रेट बॉडी रो करि पारेनी कि बैलेंस करि पारेनी जे आपले किडनी रो माने किडनी रो डिफेक्ट बाहरे बा किडनी डिजीज सब ग्रोथ हुए जो पानी मानकरे लीड फ्लोराइड विभिन्न प्रकार मिनरल्स जोडा माने बहुत मात्रा रे थाए तो सेही पानीटा आमो पई कि भलो नुहे तो सेहीटा को क्लोरिनेशन रे सेटा अवश्य जीवनी किंतु किछि मात्रा ऑक्सीडाइज आयरन मैंगनीज हाइड्रोजन सल्फाइड एटा को से ऑक्सीडाइज करि दबो बोली कहूची कंट्रोल वेजिटेबल ग्रोथ रेस्टोर टेस्ट ऑर्डर प्रोड्यूसिंग कन्स्टिट्यूट दिस स्टेप्स इंडिकेट क्लोरीन वाटर हमर जोटी एते मिनरल्स रहउची पानी रे किछि मात्रा से बैलेंस करिवो किंतु ए सब मिनरल्स जो बहुत मात्रा जो मिनरल्स जो जो पानी रे रहे सेटा हला जोटा बोरिंग होउची जोटा बहुत डीप ये रे हमर पानी सोर्सेस ता आसुची सेठी प्राय तो गोटे एरिया रे बहुत एमती मिनरल्स जोडा देखा जाए जोटा कि बॉडी पई कि मेनली किडनी पई भलो नुहे तो सेटा को फिल्टराइजेशन करिया पे हम क्लोरिनाइजेशन ता यूज करा जाउची बहुत बड़ा मेटल्स को बा मिनरल्स को माने ऑक्सीडाइज करिया पे अदर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन हला आयोनाइजेशन sorry ozonization ozone is a powerful oxidizing agent it advantages over chlorination is ozone can be destroyed viruses ओजोन टा कोन हुए ना सेटा भाइरस को डिस्ट्रॉय करे तो सेथि पई कि ए मेजर ड्रॉबैक्स टू यूज इन ओजोन इज दैट जर्मिसाइडल इफेक्ट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्स टू ओजोन प्रोसेस तो सेथि पई कि एस्टिमेटेड करा जाय 0.2 टू 1.5 mg ऑफ ओजोन पर लीटर ऑफ वाटर इक्वल टू प्यूरिफिकेशन जेंति क्लोरिनेशन रे हमें कोन करू ना तादरे टैबलेट्स फॉर्म रे आसे हमें ताको पको तो हमर पैथोजेंस केतोडे पैथोजेंस को माने से ये करे नष्ट करे आउ हमर मेटल्स बा मिनरल्स को किछटा मात्रा कंट्रोल करे ऑक्सीडाइज करे आ ओजोन फॉर्म रे कोन हुए ना तार 0.2 टू 1.5 mg ओजोन पर लीटर वाटर रिक्वेस्ट फॉर प्यूरिफिकेशन आपे गोटे लीटर पई कि 0.2 रु 1.5 mg लागु छै आपनकर जति कि पानी रिजर्वियर थिबो से अनुसार आपन पकै कि प्यूरिफिकेशन करिवे अर्बन जगह रे हमें ए भलिया न रहिले हमकु बहुत जल्दी कंटामिनेशन बा स्प्रेड होबार वाटर बोर्न डिजीज बा बैक्टीरिया स्प्रेड होबार चांस थाए जा फल रे कि हमकु टाइफॉइड कॉलेरा डिसेंट्री डायरिया ए सब जिंस हमकु बहुत जल्दी स्प्रेड करिवो सेति पई कि अर्बन जगह रे हमरो तांगर किछि ये नै से माने निजे निजे ये करी कि से माने रेन वाटर को स्टोर करंती आकु करंती किंतु अर्बन क्षेत्र रे हमकु ए सब जिंस फॉलो करिवा को पड़े ठीक अछि एतिक रहइबा नेक्स्ट क्लासेस रे बाकी तक डिस्कशन करिबा।